What I was saying was, in agriculture, we set up a system through which we can find out the moisture in the soil. We can inform the agriculturalists as to when the rain is going to come, when this particular plot of land doesn't have enough moisture, so that the agriculturalists can actually access water to. We were able to tell fishermen as to when the chlorophyll in the ocean was enough for fish to come so that they didn't go and fish. We were able to tell the fishermen of this country the warning systems as to when it's going to happen. We, in fact, the entire climate system was in analog mode. We changed it all to digital mode. So the kind of things that have happened in this country are so great that we must celebrate science on a daily basis. And so the last thing that I want to say, and that is this, sir, not only this, we have actually in the biotechnology sector done so many milestones that we have achieved in this country. But people don't talk about that because people want to use this forum as a forum to pat themselves on the back. Thank you very much. श्री प्रकाश जावड़ेकर। सर, कितना समय है मेरा? चलो, प्रकाश जावड़ेकर जी, बड़ी कोशिश की, आपका समय तो नहीं बता सकता, नहीं, पर आपके पार्टिसिपेशन का समय 15 मिनट है। सभापति महोदय, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने परमिशन दी है। और 2 दिन पहले जब हमारा चर्चा हुई थी, तब मैं उस समय मिस इन्फॉर्मेशन या मिस कम्युनिकेशन के कारण नहीं आ पाया था। पहले तो आप जैसे सबके साथ मैं जो चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान गया, उसका जो देश में खुशी है, उसमें सहभागी हूं। और सब वैज्ञानिक जिन्होंने स्पेस साइंस की शुरुआत की भारत में, विक्रम साराभाई से लेकर, क्योंकि आप नेहरू बोलोगे तो फिर मोदी बोलना पड़ता, तो आप एक तय करो, वैज्ञानिकों की बात करनी है ना, तो मैं वही कर रहा हूं। प्लीज तो सारा एक मिनट, मिस्टर जावड़ेकर एड्रेस चेयर, सारा भाई से, प्लीज सारा भाई जी, प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज 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 Honorable LOP, please take your chair. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Mr. Javadekar, you address chair. You address chair. ऐसा है कि ये एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि कपिल सिब्बल जी ने अभी कहा कितनी तरक्की बायोटेक्नोलॉजी से लेकर हर क्षेत्र में हुई है। और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारी नए प्रयोग और जो भी आज तक भारत ने हासिल किया है, उसका देश के तरक्की के लिए उपयोग हो रहा है। सरकार बदलते ही पुराने टेक्नोलॉजी हो गई ऐसा फेंक नहीं देते, उल्टा आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा दृष्टि है। मैं तो सबको कहूंगा कि रॉकेटरी सिनेमा है वो देखो, बहुत अच्छी मूवी है। और उसमें भारत में एटम बम कैसे बना और ये कैसे बना, रॉकेट कैसे शुरू हुए, ये सब कहानी है, बहुत अच्छी तरीके से रखी है। उनको दिक्कतें क्या आई वो भी उसमें दिखता है, लेकिन भाभाजी हो, साराभाई, कलाम, चिटनीस, धवन, सबके प्रति देश शुक्रगुजार हमेशा रहेगा, क्योंकि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और कोई बोल रहा था कि उनको तनख्वाह कम मिलती है, कम तनख्वाह मिलने के बावजूद भी देश के प्रेम से आर के धवन वापस आए थे, सतीश धवन, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उनका हमें ज्यादा शुक्रगुजार रहना चाहिए। आज हमारे यहां ऐसी बीच में राजनीतिक नोकझोंक हुई, दुनिया में क्या रिएक्शन है? आज आपने भी सुबह सबका पढ़ा होगा, सबने, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं नहीं और भारत तो चंद्रमा पे भी गया। ये उनका
दुख है, ये उनका आज भारत का हासिल है। हमें गौरव होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए। एक मिनट, ये उपग्रह छोड़ना यानी उपग्रहों को लॉन्च करना दूसरे देशों के भी या किसी के भी, लेकिन अपने जो इच्छित स्थल है वहां उसको लॉन्च करना, रखना, ये काम में हमने महारत हासिल की। अगर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे सारे देश हमारे यहाँ आकर होते तो हमें खुशी होनी चाहिए ना। इसमें दुख की क्या बात है, इसमें विवाद का क्या बात है। मैं आपको एक, खरगे जी आपको अच्छा लगेगा ये, कि पूना में एक बार एक ऑल पार्टी या सरकारी कोई कार्यक्रम था, कांग्रेस के मंत्री थे रामकृष्ण मोरे, वो बोल रहे थे और बाद में अटल जी बोले। तो अटल जी ने ये कहा कि हम कभी ऐसा नहीं कहते कि कुछ नहीं हुआ आपके जमाने में, आपके जमाने में कुछ नहीं हुआ ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जितना और जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ ये हम कहते थे। और इसलिए नहीं, मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री है कि जो बार बार लाल किले के प्राचीर से भी कहते हैं कि हर प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है, हर प्रधानमंत्री ने काम किया है देश के लिए। ये मोदी जी कहते हैं। मुझे ये बताइए, एक मिनट, एक प्रधानमंत्री म्यूजियम निकला है, तैयार हुआ, वहां इंदिरा जी का, नेहरू जी का, वहां राजीव गांधी का, सब नहीं उसके पीछे है। आपने गए ही नहीं, आप गए ही नहीं तो क्या करेंगे, आप जाइए। लेकिन मुझे यह बताइए कि आपने ऐसा कभी सोचा का कि सभी प्रधानमंत्रियों का कोई म्यूजियम होगा और उसमें अटल जी का और बाकियों का भी लगेगा? नहीं करेंगे, नहीं किया। और मैं आगे बताता हूं, ये एक मन की उदारता होनी चाहिए। मैं नरसिंह राव की याद नहीं कराऊंगा, आपको मालूम है। लेकिन अगर बड़ी चीज होती है तो देश का लीडर कौन है ये बोलते ही है, तो उसमें लोग बोलते हैं, अपन बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दूसरे पक्ष पे आता हूं कि मूल मुद्दा है जो संजीव पाठक ने भी बोला और जो कपिल सिब्बल जी ने भी अभी बोला कि भाई इनोवेशन, वी लैक इन इनोवेशन, वी हैव टू टेक इनोवेशन मच फर्दर। देश आगे बढ़ता है इनोवेशन से, जो संपत्ति तैयार होती है। वो जो आईफोन के निर्माता है स्टीव जॉब्स, उसके साथ मैं 2 दिन था, उस समय आईफोन नहीं निकला था। उसने हाथ में दिखाकर जैसा हैंडहेल्ड पकड़ा है ऐसा बताकर, मैं ऐसा हैंडहेल्ड तैयार करूंगा कि जो मल्टी यूज के लिए होगा और सारी दुनिया बदल जाएगी, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये उसने बताया। और बाद में आईफोन आया और हमने देखा कितना परिवर्तन हुआ। लेकिन और इनोवेशन का मैंने कहा एक बार कि आईफोन के सारे जो पार्ट्स है उसकी कीमत अगर लगाएंगे तो 10, ये मोबाइल में है राजीव जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स मे नॉट बी मोर देन 15-20,000 जो रॉ मटेरियल है सब, लेकिन उसमें उपयोगिता आई तो 1 लाख रुपए का हो गया। तो दिस इज द वेल जनरेटेड बाय इनोवेशन। तो इनोवेशन का सम्मान होना चाहिए। आज जो हम प्रस्ताव लाए हैं वो इनोवेशन का सम्मान करने के लिए है, साइंटिस्टों को मुबारक करने के लिए है, इसलिए ये है। और इसलिए अभी 1 मिनट मैं बता रहा हूं, अभी खरगे जी गए लेकिन चिदम्बरम भी आज नहीं है। चिदम्बरम जी कहते थे कि भाई ये मोबाइल से पेमेंट होगा, मोबाइल से ऐसा होगा, कैसे होगा?
ग्रामीण, जैसे कल खरगे जी बोल रहे थे बैकवर्ड क्लास की महिला अनपढ़ है। अरे किसने कहा? अच्छा पढ़ते, एक मिनट प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट प्लीज। उनका अपमान मत करो। प्लीज वो स्कूल में जाते हैं। जावड़ेकर जी प्लीज सब्जेक्ट पे बोलिए आप। तो वो स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, पढ़ना चाहते, आगे बढ़ना चाहते। सवाल है कि ये लोगों को कैसे समझेगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन आज अमेरिका से हमारे कोई दोस्त आते हैं तो बाजार में जाने के बाद सबसे अचंभा करते हैं कि कोई कार्ड से पेमेंट ही नहीं कर रहा है, कोई कार्ड लेकर एटीएम में जा ही नहीं रहा है, सभी मोबाइल से ही पेमेंट कर रहे हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं जो भारत में हो रहा है। तो ये साइंस है, ये हमारी उपलब्धि है, देश करके है, सबकी है, और सबको बढ़ते हुए भारत को प्रोत्साहन देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। मैं 2-3 ये कैसे इनोवेशन बढ़ेगा, तो मैं शिक्षा मंत्री था तब मैंने एक कल्पना आई, हैकेथॉन शुरू किया इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कि 6 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इकट्ठा बैठेंगे। हमने जिसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है ऐसे 500 सवाल उनके लिए दिए, और इसमें से कोई भी सवाल चुनकर उस पर जरा 3-4 महीने एफर्ट करे, शोध करे, आइडियाज लड़ाए, और उसके तरह से आपका सॉल्यूशन पेश करे, कोड पेश करे। इस तरह का पहले वर्ष में हमने किया। 40,000 इंजीनियरिंग छात्रों ने भाग लिया, और मुझे अच्छा लगा कि अब 8 साल हो गए, 8 साल में ये संख्या 5 लाख से भी अधिक हो गई। इतने छात्र हर साल करते हैं, वो ये सही शिक्षा है, ये शोध की संस्था है, ये शोध का संस्कार है। इससे ही देश आगे बढ़ेगा। इससे आगे जाकर सभी आईआईटीज में और एनआईटीज में हमने इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किए। इंक्यूबेशन सेंटर में आज इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी एंड मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड स्टूडेंट्स सब इकट्ठा आ रहे, और देश के लैब्स जो है, पहले क्या होता था, लैब्स अलग, इंडस्ट्री अलग, यूनिवर्सिटीज अलग, हमने तीनों को जोड़ दिया, और उसके कारण एक शोध का माहौल बना। इससे कारण ये इंक्यूबेशन सेंटर में सैकड़ों नए प्रयोग केवल नहीं हो रहे, बहुत अच्छे शोध पेटेंट लग रहे हैं। पहले तो पेटेंट मिलने को भी 4-4 साल लगते थे, अब 4 महीने में पेटेंट मिलता है। ये बदलाव करके दिखाए। ग्रैंड चैलेंज हुआ, और जिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुझे भाग्य रहा कि 2 साल जो तैयारी उसकी हुई, और जो तैयार हुई पॉलिसी, उसका आखिरी मुझे कस्तूररंगन जी ने कॉपी सौंपी। फिर दूसरे दिन मेरा पर्यावरण मंत्री में था, तो इसलिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यह हमें है। आज आपको पता नहीं होगा कि इसरो और डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी कहां कहां उपयोग आती है। समुद्र में जो मच्छी के व्यवसाय के लिए जो जाते हैं मछुआरे, तो उनको लिए नेविगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विद द सैटेलाइट they have the phone and they can receive all signals and they get the correct direction. ये हो रहा है, इसरो का शोध है। आज कॉलेजेस के इंस्पेक्शन के लिए हमारे अनेक इंस्पेक्शन की ये बनती थी 4-4, 5-5 प्राध्यापकों की या शिक्षाविदों की, और वो सब जगह जाते थे। सब बंद किया, और अभी 1 मिनट सब बंद हुआ, और ये हुआ कि अब इसरो के और डीआरडीओ के जो अच्छा शोध हुआ, उसका उपयोग करके हम आज इंस्पेक्शन यही बैठ के 5 लोग कर सकते हैं, और उसमें कोई हेराफेरी नहीं कर सकता। तो साइंस, 1 मिनट, साइंस का मैं बताता हूं, साइंस का while sitting do not comment, this is not fair. साइंस का उपयोग no please, केवल साइंस का उपयोग एक क्षेत्र में नहीं होता। एक विज्ञान जब तैयार होता है तो अनेक क्षेत्रों में उपयोग होता है, और इसलिए
ये समझना पड़ेगा कि हमें भी ये सही बोलना पड़ेगा कि अगर हम एक काल में प्रधानमंत्री का नाम लेंगे और दूसरे में नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री देश का एक प्रतिनिधि होता है, जनता ने चुना हुआ 140 करोड़ लोगों ने विश्वास दिया हुआ प्रतिनिधि है, उसका नाम नहीं लेंगे, ऐसा कैसा होता? क्योंकि उन्होंने सपोर्ट दिया, जिसका वर्णन जितेंद्र सिंह जी ने बहुत डिटेल में किया है। और इसलिए साइंटिफिक, और वो हमें एक ही बात कहते थे कि नई शिक्षा, ये जो शिक्षा नीति बना रहे, इसमें साइंटिफिक टेम्पर कैसे तैयार होगा, वही तैयार करना है, और वही आज हुआ है। देखिए उसके नतीजे, भारत आने वाले 10 साल में बहुत आगे बढ़ेगा और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। इतना ही मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय जावड़ेकर जी। माननीय डॉक्टर शांतनु सेन जी, 6 मिनट। Dr. Shantanu Sen, please. Yes, mic is on. Yes, it's on now. My time starts now, sir. Yes. Thank you, respected Chair. First of all, I'd like to wish my previous speaker, Prakash Javadekar ji, a good ministerial birth in the coming reshuffling. The way he was praising Modi ji government, because after 2024 parliament election, there will be no chance On at the all. subject, please, on the Yeah, I am subject. coming Dr. to the subject. Yes. Sir, as we all know that Indian National Committee for Space Research, that is INCOSPAR, was set up in 1962, which was superseded by ISRO in 1969. But I have got every doubt, while taking all the credit in their own court, the Treasury bench can loudly speak out and pronounce the full form of INCOSPAR or ISRO, because both start with India. And we have seen, being very scared of the India alliance, they are in a mode to remove India from every nomenclature. Please, subject, Dr. Saab. I am coming to the subject. This is not the subject, please. Sir, during landing of Chandrayaan-3, we have seen our learned Prime Minister celebrating sitting in South Africa because he went there to attend the BRICS summit. Unfortunately, amongst all the BRICS countries, India is paying the lowest possible GDP for science and technology. That is only 0.6% in comparison to that of America, which is 3%, China, which is 2.4%, and South Korea, which is 4.5%, sir. Sir, I will cite some examples to show the real concern of our government of India so far this ISRO is concerned. Sir, the funding of ISRO for 2022, it was 13,700 crore. And for 2023, it has come down to 10,530 crore. Sir, so far the budgetary allocation is concerned, the budget allocated in the financial year 2024 is only 12,544 crore. It has been slashed down by 8% if you compare with the previous allocation, sir. Sir, my previous colleague was talking about enormous development in science and technology in country, of course. That's why during COVID we have to keep faith on thali bajao and cows urine to get rid of COVID. That is the ultimate example of science development in science and technology in our country of India, sir. Sir, I will tell you, in our state of Bengal, it has played a significant part in the historic feat. 31 scientists, they are from Bengal. Anuj Nandi from Islampur of West Bengal. He was not just a part of Chandrayaan-3 mission team. Dr. Saab, just a second. आपकी पार्टी से एक और वक्ता है, कुल 6 मिनट्स हैं. आप उनके लिए क्या समय छोड़ेंगे? That you decided. ठीक है. But also she worked as the chief designer of the camera that was attached to the primary body of Chandrayaan-3, sir. Sir, I would like to let the House know a very important information. Sir, there is a person in Jharkhand whose name is Deepak Upararia. He was an expert of ISRO. Now,
there is a photograph in my mobile which has been published in a very renowned newspaper. He is selling idli on the road because he, like many others, is not getting their salary for 18 months. He is having a bank loan of 4 lakhs of rupees. He has kept all his wife's ornaments on mortgage to earn his livelihood, sir. This is the great development of our government. I would like our learned publicity masters to see to it. Another important point, sir, in Chandrayaan-2, two women, Srimati M. Vanita and Srimati Ritu Khardia Srivastav, they played a very important role in the form of project director and mission director. But we have seen in case of Chandrayaan-3, they are all male performing in the team. My humble submission to our government will be, please try to encourage more and more women in this system, sir. And finally, I would request our Treasury bench, please do not forget the name of Dr. C.V. Raman, Dr. Vikram Saravaiya, Dr. Homi Jahangir Bhabha, Dr. APJ Abul Kalam, who were the pillar of this institute. And my final submission will be to my government. Yes, we have been seeing many publicity masters who are spending even 85% of a particular project for publicity, who are spending huge amount of money in building up new buildings, which are of hardly any necessity. But ISRO, the pride of our nation, they are severely ignored by our government. My humble submission will be, yes, try to take the credit of this Chandrayaan. At the same time, please look into it that another Deepak Upararia doesn't come on the field and sells idli because of your neglect, sir. Thank you very much. डॉक्टर साहब, आपने पार्टी का लगभग पूरा समय ले लिया, so next speaker will not get time, just for information. Thank you. This is now Shri Mani M. Muhammad Abdullah, 3 minutes. Mr. M, please, 3 minutes. No. I have no information. Yes. Are you speaking in? Just a minute, he will continue. Just a suggestion, he will continue, please. Chairman has given his concern. Sir, one of the directors of Chandrayaan-3, Mr. Shankaran, who was my junior in college, a government college which was meant for rural people, has successfully done that and is now working for Aditya 1 also. So instead of, I thought we may felicitate the college or anywhere else, but it is right to mention those names here. That would be a real credit to them. And in general, instead of mentioning each and every name, I would suggest that the House can move a motion and adopt to congratulate all the scientists and engineers who were in the successful mission. I think all the members would agree, and such a motion could be motion, sir. I also conveyed to the minister. Thank you, Tiriji. Now, Mani M. Muhammad Abdullah. Sir. 3 minutes. No, sir. Total allotted time is 15 minutes. 6 minutes he has already spoken. I have 9 minutes, sir. Just check. We'll check it. Yes, sir. Check it. Please speak. Honorable Chairman, sir. 3 minutes likha hua hai, wo keh rahe hain 9 minutes. On this pride moment that India became the first country to reach the South Pole and the fourth to be on the moon, with the remembrance of Dr. APJ Abdul Kalam, a Tamil pride, a national pride, I start my speech with his remembrance, sir. Sir, the country's ability to execute space mission reflects its confidence and shows that this is India's time. The lander model of ISRO's third lunar mission, Chandrayaan-3, made a successful landmark landing on the moon's southern pole on August 23rd as an iconic moment for India. Sir, on this historic occasion, I would like to recall one thing, that Chandrayaan-3's successful soft landing on the moon had given Tamil Nadu an extra reason to cheer. Yes, all the project directors of this country's lunar mission and also the first Indian mission dedicated to observing the sun are from our state of Tamil Nadu, sir. Sir, Dr. Mailsami Annadurai, dubbed as the Moon Man of India, led the maiden Chandrayaan mission in 2008, confirmed the presence of water on the moon. With this,
the world turned towards India. Then at the second time in 2019, as the first Indian woman lead to India's lunar mission, Mrs. Vanitha Muthaya, a Tamil lady, becomes the project director of Chandrayaan-2. Then Chandrayaan-3 was launched on July 14th and successfully landed safely on the moon after 40 days, and this country once again turned the world's gaze towards itself with Mr. Veera Muthuvel as its project director. Then Aditya L1, the India's first solar mission, and Mrs. Nigar Shaji, a Tamil lady, is the project director. Sir, the most important thing I want to mention at this time through this August House is that all these scientists are not only from our state of Tamil Nadu, but by all studied in our state education system of Tamil Nadu, according to our state curriculum, from the poor and middle class background, and belongs to the backward communities and minorities communities, sir. Sir, Tamil Nadu have a visionary history behind this achievement, sir. Through that, we had shown the best governance model, known as Dravidian model, not only to the country, but also to the entire world, that everyone should know and aware about it now, sir. Sir, Tamil Nadu has many firsts to its credit, but very few are aware that it was in Chennai, Tamil Nadu, that the world first midday meal was served to the students way back in 1920, 100 years back, based on the idea of Sir B.T. Tyagarayar, and then the president of Dravidian party, namely called Justice Party, as Subrayulu, first chief minister of Madras presidency, implemented the midday meal scheme in the corporation schools in Chennai, sir. The constitutional provision for universalization for primary education has not yet been fully implemented in India. It becomes a distant goal even now. But Tamil Nadu tries to be ahead of achieving it. Tamil Nadu is one of the most literate states in India now, sir. Following the pioneering initiative of Justice Party leader P.T. Tyagarayar, our ex-chief ministers, Mr. K. Kamraj, and our beloved leader, Dr. Kalaignar, have tweaked the feeding program and contributed to its steady evolution. Gradually, its focus shifted to addressing nutritional issue and checking dropouts from schools. Sir, the purpose was the same when Kamraj expanded the program to all schools across the state. So they wanted to see more students from poor socio-economic backgrounds enrolling in school. The midday meal wish was the boon for students from scheduled castes and the backward communities when Kalaignar initiated on 5 eggs and the bananas to be supplied along with the midday meal in government schools. Sir, even after the development of midday meal scheme, Tamil Nadu found the gap in achieving the universalization of school education to all. Hence, it realized that the overall development of the nation and the state education must be made easily available to all. But poor people in rural as well as the urban area failed to send their children to school due to several reasons. Keeping it on mind, as a part of that, Tamil Nadu government has started another schemes providing free bicycles to students, initiated by Dr. Kalaignar. The name of this scheme is Free Bicycle Scheme. Dr. Kalaignar made higher education free for first generation learners and even launched the EVR Nagamai Memorial free graduate education for school schemes. He was constantly launching similar schemes that made education accessible to everyone, especially the underprivileged section of society. There was 50% reservation for rural students in professional course. Entrance exam for professional courses was scrapped. In 1989, sir, in 1989, sir, he introduced a free bus pass scheme for the school students to go to school. Free computer training for the school. We are discussing on Chandrayaan, Mani Mohammed. Yeah, I'm coming back to the point. Please. Yes, sir, I'm coming back to the point. Yeah, this is how our backward scientists came to ISRO. I'm just explaining. Come to the subject. Yes, sir. These are just a few of the many schemes did by the Dr. Kalaignar. And even now, it is being continued under the leadership of our Honorable Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, aims to optimize social welfare gains by tweaking a century-old scheme to offer the first meal of the day that is called as a Tamil Nadu Chief Minister Breakfast Scheme right now, sir. Sir,
as Mr. is not here, I think so, Mr. Ramesh Jairam said, it is a journey of 60 years of Indian education. But in Tamil Nadu, it has its own journey of about 100 years through the Dravidian ideology. Through this, we have contributed not only to our state and also to the nation. This is what I want to point out now. And this is how the uniqueness of our federal system contribute to the nation building. The others are criticizing our welfare scheme as a freebie, but we are investing it for the development of the nation in view of social justice. Sir, that's why we are proudly calling it as a Dravidian model, sir, which is much, much needed for this time, for this country, not only for the scientific development, in all the development. With that, I conclude, sir. Thank you. Thank you. Now, Dr. Ashok Kumar Mittal, 5 मिनट. और माननीय सदस्यगण, आपको मालूम है जो विषय है डिस्कशन का, उसी पर हमें बोलना है, not other points related. So please speak on the subject. Please. You know the rules. धन्यवाद महोदय. आज मुझे इस नए सदन में चंद्रयान के ऊपर बोलने का मौका दिया जा रहा है. मैं इसका अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद हूँ. और सबसे पहले मैं इसरो के अध्यक्ष श्री सोमनाथ जी और उनकी टीम को और उनकी पूरी संस्था को इस सदन की तरफ से, अपनी तरफ से, देश की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे विश्व में भारत का परचम फहरा दिया है. सर, 1965 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान. बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने पोखरण के दौरान इस नारे में संशोधन किया और कहा, जय जवान जय विज्ञान जय किसान जय विज्ञान. और मुझे वो समय याद है, 3 जनवरी 2019 को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इंडियन साइंस कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए आए, उन्होंने इस नारे में और संशोधन किया और उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान. और उन्होंने एक नया शब्द जोड़ा इस नारे में, जय अनुसंधान. और पूरा नारा बना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान. और मैं खुशकिस्मत हूँ कि जब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यह नारा दिया, मैं उसका साक्षी हूँ. माननीय सर, और मुझे खुशी है, थैंक यू, और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के उस नारे की वजह से आज हमारा देश चंद्रयान की सफलता के पूरे विश्व में जोर शोर से मना रहा है. मैं इसके लिए फिर अपने पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहूँगा. सर, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की और उसके एक सप्ताह बाद हमारे देश का एक पवित्र त्यौहार आता है, रक्षाबंधन. जिस प्रकार हर बहनें अपने भाई को राखी भेजती हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, पूरे देश को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारा देश की 70 करोड़ बहनें चंदा को, जिसको चंद्रमा को, जिसको हम चंदा मामा भी कहते हैं, चंद्रयान के रूप में एक हमने राखी भेजी है. माननीय महोदय, चांद का हम सभी के जीवन से एक भावनात्मक जुड़ाव है, संबंध है. बचपन की लोरी चंदा मामा दूर के सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं. और बॉलीवुड की हम बात करें तो मेरे ख्याल पुरानी मूवीज में कोई भी गाना ऐसा नहीं होता था जिसमें चंदा का वर्णन नहीं होता था. जैसे चांद सी महबूबा हो मेरी, या चंद्रमा में भी एक दाग है. तो इस तरीके के हम गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं. इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग तथ्य है कि एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, मिशन इम्पॉसिबल, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फिक्शन पर थी. लेकिन
उसका बजट क्या था हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की सफलता से उत्साहित ही हुए, नीचे नहीं गए और चंद्रयान 3 को मिशन आई एम पॉसिबल बना के हमारे सामने पेश किया। सर, चंद्रयान 3 रियलिटी है, ये फिक्शन मूवी नहीं है कि 615 करोड़ में हमारे वैज्ञानिकों ने इसको कामयाब किया। और ये हमारे लिए और भी हर्ष का विषय है कि इस मिशन में महिलाओं का भी पूरा योगदान रहा, महिला वैज्ञानिकों का भी पूरा योगदान रहा। और हमारा दूसरा सदन इस टाइम महिला रिजर्वेशन पर बात कर रहा है, ये हम सबके लिए हर्ष का एक विषय है। हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड की मूवीज बहुत प्रसिद्ध हैं और उसमें एक मूवी थी ऑक्टोपसी। सर सिर्फ 1 मिनट। और उसमें भारत को स्नेक चार्मर कहा गया, जादू टोने वाला देश कहा गया। सर, मैं उससे प्रेरणा लेते हुए बोलना चाहूंगा, यस, भारत जादू का देश है, यही वो देश है, उसी में ही जादूगर है इसरो, जिसने इतने कम समय में और इतने कम दाम में एक सफल चंद्रयान बना के हम सबके आगे पेश किया। यह भारत का ही जादू है और भारत ही एक जादूगर है। सर, चंद्रयान इस टाइम स्लीप मोड में है, लेकिन यह पूरा सदन, पूरा देश जागा हुआ है और हम सब इस सदन के माध्यम से पूरे देश को बधाई दे रहे हैं। सर, एक छोटी सी मेरी बेनती है, हम 2023-24 में हमने सर सिर्फ एक मिनट चंद्रयान लॉन्च किया और इसी वर्ष हमने इसरो का बजट घटा दिया। सर, जो 13,700 करोड़ था पिछले साल, वो 12,543 करोड़ रह गया। तो मेरी बेनती है सरकार से कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। और सर, अंत में मैं अपने वैज्ञानिकों को, भारतीय वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई और अभिनंदन करने के लिए 2 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, हमारे वैज्ञानिक, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती निर्मला सीतारमण। So thank you very much for giving me an opportunity to speak on an issue in which the entire nation feels very proud and also has been one in voicing such a sense of pride in appreciating the ISRO. Sir, the launch of Chandrayaan 3, particularly to the south pole of the moon, India has become the first country to do so. Whilst countries have launched and landed in the moon, we are only the 4th in the line. But for reaching the moon's southern pole, we are the first. Now, I just want to briefly recall how in 1975, India, with the help of Soviet Union then, the USSR, launched the Aryabhatta satellite. That was a heavy satellite, but it was launched by the Soviet Union for us. So that was the first ever attempt by India's ISRO to position something in the space, to enter the space itself. But after that, if you look at this spectacular journey that the ISRO has had, this success of Chandrayaan 3 is certainly going to have a very big impact on India's industrial and technological ecosystem. It's going to directly, of course, affect positively the satellite systems area, telecommunications area, and there are very many other related fields, all of which will benefit from it.
Although in 75, we needed the Soviet Union's help to launch our Aryabhatta, a space station to go into the space for the first time from India. Today, as of July 23, our record is such that we've already launched 431 foreign satellites for other countries. That is, 34 different countries have utilized ISRO's facility and their knowledge systems to launch their satellites. And I'm just recalling in 1975, our Aryabhatta being launched by Soviet Union for us today, but we are in a position to launch 34 different countries' satellites, but totaling to 431. What a spectacular journey this is for ISRO. So, Chandrayaan-3, sir, also stood out, in my observation, also stood out for one particular achievement, which has a blend of innovation, has a blend of how technology and innovation working together can work for global achievements and sustainability. I remember also seeing a lot of comments which said, oh, but this is no good, it has taken this many number of days to reach there. Did it require that many number of days? Can it not be done lesser in lesser number of days? Because quoting some other countries, they said they reached the moon in 20 days, whereas you took 45 days, and so on. But the secret behind that, the fact behind that, is the innovative way in which ISRO has handled it. In that, they chose a path to reach the moon, which was not otherwise thought of, but thought only because, due to the route selection, and I'm using very pedestrian language here, I'm conscious of that, using such a route selection, ISRO made it possible to do it cost effectively, because the gravitational pulls, any magnetic fields which come in the way, I'm sorry, again a pedestrian language, can exhaust more fuel. But the way in which ISRO decided to take this Chandrayaan-3 was chosen not for a racing expedition. I'll have to reach there faster than somebody else, but I have to reach there in a cost-effective manner using lesser fuel and therefore serve the purpose of sustainability. Space research also has to be sustainable because otherwise it becomes too expensive and cannot be afforded at all. So, innovation intertwined with sustainability, particularly in the realm of space, is what ISRO has achieved by choosing the route with which it reached the south pole of the moon. Now, the lander that is there was named Vikram probe. Obviously, the name reminds us of Vikram Sarabhai, who set up the first rocket launching station, which we are now using repeatedly. Nobody ever in India can forget the contribution that Vikram Sarabhai or Homi Bhabha did. Of course, Homi then moved over to the Atomic Energy Commission, which was carved out of the then body ISRO. So, Vikram probe did something spectacular again. Having reached the South Pole, for the first time, the density and the temperature of the moon's ionosphere has been recorded. Several people went to the moon earlier, landed in the moon earlier, but we did the first thing of landing in the South Pole. But for the first time again, the moon's ionosphere and its density and the temperature there has been recorded by our Vikram probe. Interestingly, from the probe, the rover which is moving slowly on the surface of the moon, the Pragyan rover, in its exploration has unearthed groundbreaking discoveries, sir. The presence of sulfur, for instance, in the lunar south pole has come as a very big surprise to the scientific community. So, I'm happy to say
Chandrayaan-3 landing in the South Pole for the first time does not just stop there, it has also created a lot more record on its own. Just going back, Chandrayaan-2 also would have achieved, but for the last-minute tragic failure, but ISRO showcased to the world that it shall not be deterred by that failure. It would learn lessons. Every strand of the errors have been identified, lessons learned, and today we see that the ISRO has corrected itself to the extent that very many little errors which had crept in earlier had been removed and better solutions have been offered than what had been given in Chandrayaan-2 itself. No wonder that the chief, S. Somanath, has been received by the Indian common citizen everywhere. When he went into a flight, people stood up and clapped for him. This is the kind of respect Indians have, we our people have, for such great achieving scientists of this country. Nobody ever forgets them. And today, ISRO and ISRO scientists are all very recognized by people of India. And in the process, I'll later delve into this point, they are people who have studied from Tier 2, Tier 3 colleges, gone into Indian Institute of Sciences and many such institutions, but they are there sitting and contributing for the future development of India and also sharing their knowledge with the entire space community all over the world. Now, if I spoke about Chandrayaan-2, sir, I'll also take this opportunity to say about Chandrayaan-1, which was launched in 2008. Even that was a wonderful, sir. Honorable members, what a sight. Look at the galleries. Look at the galleries. Jayaji, look at the galleries. All your gender. And you are iconic to all of them. And at a time when the Honorable Finance Minister is on legs. And this has happened right from the beginning. But that it would happen so continually is unimaginable, is spectacular. My tribute to this great power which is being unleashed in India to change it for the better and to take it to 2047 gloriously. Honorable Finance Minister. Thank you very much, sir. So I'll take this opportunity which you've given me by highlighting the women and girls in the gallery. Equally impressive, sir, and I'm sure you would have noticed it as well. And Jayaji would also probably appreciate the fact that we have... I heard it, sir, but what I wanted to say is, Jayaji, because the school children who are here, I'm so touched by the fact that they are here to observe what we are discussing. And I'm sure, yes, all the members would feel happy about the presence of the future generations of India here. Oh, okay. Honorable Leader of the House reminds me that I'm not wrong in mentioning Honorable Jaya ji's name, because she apparently acted as a school child. Yes. In a student with uniform in a film. I was reflecting, honorable members, on that memorable contribution as a great artist and elevating her to iconic status, which she has sustained all throughout. Honorable Finance. Appreciations, Jayaji. Sir, I did mention about Chandrayaan-2 and wanted to move over to briefly talk about Chandrayaan-1 as well. But before I do talk about Chandrayaan-1, I want to remind myself and also place it before the honorable members in this House that on probably 7th September 2019,
midnight, the Governor of West Bengal, the then Governor of West Bengal, and now Vice President of India, witnessed that landing, which of course had a problem, but along with hundreds of school children in the science city of Kolkata. And today, you are reminding us about the school children who are here to listen to this debate on the Chandrayaan-3's success. So Chandrayaan-1, sir, if I can just go one step backward, was also a very successful mission. 2008, when it was launched, it discovered the presence of water on the moon's surface, and it also provided a lot of insights into the lunar geology. So obviously, each one time that ISRO had attempted to do, they have come out with extraordinary contributions to the space science, and that is now actually being used by the space community, scientist community from all over the world. And repeatedly, when we talk about ISRO, I will definitely recollect that the founders of ISRO, as I named them earlier, Vikram Sarabhai or Homi Bhabha, had all remembered that this contribution or this investment in space is an investment in future, and that it will be done for the sake of development and also for the sake of humanity. That spirit continues even today, sir. I would want to highlight that. And when I do that, it is purposely because I want to bring to the context that continuously in India, ISRO has received that kind of a support from all communities, ordinary citizens, students, children, scientific community, and from the government of the day. The kind of support that ISRO has received is something which all of us are proud of, and we'll continue doing that. Now, but of course, much before I go into talking many more things, a theme which I want to mention here, and I would probably respond to it repeatedly, is a comment which Jairam Ramesh had made, honorable members not here, but he has made in the morning about, muscular nationalism, you leave it to the scientists. Sir, yes. And I also recall, I wasn't in the House, but I've seen it subsequently, that former President APJ Abdul Kalam had referred to Professor Satish Dhawan and said leadership should be like that, where once when a mission failed, he had said not to worry at all. Leave it. I take the full responsibility as the head. But when the next year it was corrected and they achieved success, Professor Satish Dhawan had told our former president, then scientist, APJ Abdul Kalam, the success is due to your team and the success is to you, and as a true leader, gave the credit to the team. Absolutely. Whoever would deny the scientists their contribution. But it doesn't mean that if the Prime Minister of the country stands next to a scientist or a team of scientists who worked for something, and when there is, unfortunately, a failure or a disappointment, to stand by them and say, don't you worry, you will be doing better the next time. And therefore, I read this quote. Honorable Prime Minister stood next to Professor Sivan, the scientist, during the launch of Chandrayaan-2, which in the last minute, unfortunately, broke all our hearts and disappointed all of them as much as the scientific community when it just couldn't land. Standing next to him, who had tears in his eyes, Mr. Sivan had tears in his eyes, Prime Minister had said, last night, when he stood with him, I understood your frame of mind. The look in your eyes said a lot. That is why I did not stay here for long. We might not have reached the lunar surface as planned. You came as close as you could, stay steady and look ahead.
We are full of confidence when it comes to our space program. The best is yet to come, unquote. These are not words of any muscular nationalism. These are truly the words of a Prime Minister who wants to stand next to his scientists, even at the time of disappointment, as much as the time of success. So to decry this and to say, oh, you stop your muscular nationalism, is a bit of a perversion, which I think somebody from Jairam Ramesh's experience, I wouldn't expect. So, and this is not the first time. When in 2014, ISRO had by that time launched 104 satellites at one go. Prime Minister Modi was one of the first one to say, India salutes all the scientists. It was in his Twitter handle. It was in his Twitter handle. It is there even now. So scientists are being given the due credit, and we shall continue to give due credit. Every government has done it. We also do it. But when we do it, because it's Prime Minister Modi, please don't give any other attributes which are not true. So I'll, for a minute, dwell again on the cost of the mission. And that's one of the interesting facts about Chandrayaan-2, as much as the one earlier also, about the Mangalyaan. One of the most interesting facts is that Chandrayaan-3 mission costed only around $75 million US, approximately 615 crores. These are not final figures because that will have to be finalized through the department, finally tying up every expenditure, approximately 615 crores. Then again, oft-repeated comparisons. Our Chandrayaan-3 commanded a lesser budget when compared to some of the movies which are made on space itself. You're making movies on space because we understand better, we want to know better, our future generation should know what it means, and therefore interesting films are made. But those films costed more than actually just Chandrayaan-3. I'll give you a random selection of film names and their cost. Interstellar costed $165 million. Passengers costed $110 million. The Martian, $108 million. Gravity, $100 million. And Chandrayaan, $75 million. As I said earlier, sir, innovative cost-cutting methods are the reason why it took a few days more, but the gravitational pull and also the magnetic fields which drag the satellite and therefore exhaust the fuel, in my pedestrian language that is. I'm sure there are some scientists who will be here who will sneer at my language, but simply put, that's the reason why they chose the track with which they could reach. Even if it takes a few more days, it costed them less. So I'll come to the point that increasingly India's space programs are becoming Atmanirbhar. And the immense potential of homegrown industries and their technologies are now increasingly helping our expeditions to the space. Chandrayaan-3 benefited from this. I would like to highlight where these kind of Atmanirbhar Bharat has come to interplay with the space program. India actually through the Chandrayaan-3 has displayed and showcased its capability to design, to develop, and to manufacture high-end equipments which are so required, but all domestically. Now, leading companies like Hindustan Aeronautics Limited, HAL, which provided significant mechanical hardware, and BHEL, the Bharat Heavy Electrical Limited, contributed with their titanium tanks, which was so crucial and actually helped in cutting cost as well, but a very innovative way in which we could do it. Sir, numerous private Indian firms have contributed to this,
particularly in the realms of mechanical and electronic fabrication. For a minute, I want to quote Vikram Sarabhai again. He says, if we are to play a meaningful role naturally and in the Committee of Nations, with the, we must be second to none in the application of advanced technologies, unquote. Now, these advanced technologies are not just coming from HAL and BHEL. They sure are coming from HAL and BHEL, but private players today are giving these high-end technologies, and they have made it an immense contribution to the efficiencies which are now getting recorded. The kind of equipments which we see in the Chandrayaan-3 are state-of-the-art scientific instruments which are being used, all of them which are developed in India. They include seismometer, Langmuir probe instruments, thermal probe instruments, both X-ray and laser-based spectrometers. All of them have been built in India. So, I want to underline here, sir, that scientific temper, scientific achievements are absolutely praiseworthy in ISRO. But policy has also been doing a lot of rigorous changes, which has now come to help private participation in the space sector. I remember during Atmanirbhar announcements, and subsequently in the budget of 21-22, we had announced a strategic disinvestment policy, particularly for central public sector enterprises, in which we said in the strategic areas, a minimum presence of the government will be there, will continue to be there. We are not going to shut every unit there, not at all. But there will not be any area in India which will not be available for private sector. That is, no area will be shut for private sector, and that policy actually has helped in getting the private sector to enter into space area. And as a result, today, you have innovative ideas working together with the ISRO, and that has made a lot of difference. India actually ranks 5th among countries for equity investments in space in the past decade. And that is consistently because the policy has been made more and more favorable. And as a result, we are improving in getting equity funding for the private sector which wants to involve itself in space. But even today, it is only 3% of all the money which goes into the space arena globally. We need to have more private funding coming, private equity coming, for those private companies which want to do innovative work in the space area. Sir, you have rightly given the tone of women even at the beginning of my intervention. I would like to say how Chandrayaan-3, the landing spot in the moon, has been named Shiv Shakti. Shiv Shakti obviously denotes the Ardhanarishwara principle, though. And therefore, both Shiva and Shakti give the energy and the action. Therefore, I want to say it is a tribute to the women scientists who worked in that mission. Indian women scientists have contributed immensely to the space program. Women scientists, and I quote the Prime Minister here, women scientists of this mission have played a crucial role in ensuring its success. Without their contribution, this achievement was not just possible. They will inspire generations to come, unquote. Sir, slightly over 100 women staff have played a direct significant role in conceptualizing, designing, realizing, testing, and executing Chandrayaan-3. Over 100 women staff, inclusive of scientists.
The huge participation of women shows that the scientific empowerment of women has helped, and the glass ceiling has actually been broken in ISRO for quite some time now. I'm not saying it happened yesterday, but for quite some time now. And as a result, the empowerment of women scientists, and having broken the glass ceiling, no doubt, metaphorically, they're reaching to the space. This empowerment of women scientists clearly shows that in India, there is enough opportunity and more for women, provided they're given access, given opportunity. And that is why, in this context, I like to place it on the table here, that the Nari Vandan Adhiniyam, which is being introduced in the Lok Sabha, is necessarily an instrument through which we hope the political empowerment also can be done, just as the scientific empowerment has been happening in ISRO. If that kind of access is given to women, opportunity is given to women, they can perform as well as our scientists are performing in ISRO itself in the political arena. And I'm sure when the bill comes to the Rajya Sabha, it will have a smooth passage. I'm sure all parties, all members would kindly cooperate to have that cleared. So I'd like to take, because we are talking about Chandrayaan-3, I'd like to highlight the names of those women scientists who have contributed to Chandrayaan-3. Among many others, I said more than 100 women staff, but I'm naming some of them here. Srimati Kalpana Kalahasti, Dr. Ritu Karidal Srivastava, who's known as the Rocket Women of India, Srimati Vanita Muttaya, Srimati Nandini Harinath, Srimati Anuradha TK, Srimati Maunmita Datta, and Srimati VR Lalitambika. So these are scientists who have come from various parts of this country, studied in institutions which are probably in tier 2 to tier 3 institutions, but sheer wanting to perform with excellence has moved them to do many things on reaching ISRO and today contributing towards the launch of Chandrayaan-3. So if Chandrayaan-3 was a great success, there are other cosmic endeavors by the ISRO, which is launching Aditya L1, which is a space-based observatory dedicated to studying the sun. And here again, the innovative thought of the ISRO has played an important function. Its primary function is, of course, to monitor the solar corona, while simultaneously conducting direct observations of the solar wind at the point where it will be located. And that point, I think, is called Sun-Earth Lagrangian point, a point where it could stay without having to consume too much fuel, because it's such a position that it can help in observing sun without any obstruction in between. So the Sun-Earth Lagrangian point, which is about 1.5 million kilometers away from the Earth going towards the sun, is a very important mission. A significant feature of this one is that it's got 7 payloads, which include the visible emission line coronagraph, which, like I said earlier, Chandrayaan, BHEL, HAL have contributed. In this case, the Indian Institute of Astrophysics, which is located in Bangalore, has contributed in this particular visible emission line coronagraph, which is going to be very important, an instrument which is going to be observing the sun. So Aditya L1, which was launched from Sriharikota by ISRO on the 2nd of September 2023, is one of those very important observatory for the sun, which India will be doing. There are 3 other countries which again have done this before, but India's now achieved it. So here again, a woman scientist has contributed in the Aditya L1. Nigar Shaji is a woman scientist who's actually behind this Aditya mission. So now I'll come for the last bits. Before I conclude, I just want to highlight a few points about how we see the
the future of space and ISRO in India, I just want to highlight the point that we shall continue the spirit of Vikram Sarabhai, in that achievements by ISRO shall be for the mankind, achievements by ISRO shall be for development, and achievements will be for sharing with all. With that, actually, that's where the Prime Minister said when he looked at Vasudhaiva Kutumbakam, G20 and so on, India will continue to explore, learn and share for the betterment of all humankind. So this is what the Prime Minister said. And this is what was the appreciation also given to the scientists. And again, standing by the scientists. Now I have my friend, Honorable Member Jairam Ramesh, the point that muscular nationalism doesn't play here. Stand next to the scientists at the time of achievement and also during disappointments. So that is a point I like to highlight, sir. More importantly, sir, it's important in June 2023, when Prime Minister visited the United States of America, we signed an accord, the Artemis Accord. Very important, sir, in that India also will be one of those 27 countries which have signed this accord and which is a multilateral space initiative led by US, in which one of the objectives is to send humans back to the moon through an international space station. And we shall be happily party to that. And in this context, sir, I would want to pick up on something which a former NASA Associate Administrator observed. His name is Mike Gold. He was a former Associate Administrator in the NASA. He was behind drafting and shepherding Artemis Accord. So it is important to understand what his perspectives were when India joined this accord. I quote him, sir, saying, India will not only fill the void, this is Mike Gold saying, who's been a NASA Associate Administrator once earlier, who drafted and also shepherded this Artemis Accord. He says, and I quote, India will not only fill the void that Russia is leaving, but will far exceed it. The capabilities of India to engage, to innovate, to support a more robust industry, particularly in the commercial space, is going to far outstrip anything that Russia had ever been able to do, unquote. So he also says, India was a sleeping giant in the space world, but that is awakening now. Already, he says, the country has done so much with so little. Again, that frugality with which our scientists are working has been observed by the Associate Administrator, former Associate Administrator of NASA. Sir, I believe one of the honorable members in the morning while talking said, probably it's Honorable Member Jawahar Sirkar, who said, bureaucracy now should be off science. ISRO should be devoid of bureaucratic influence. Now, it's not me, it's not anybody from India, but I'd like to again recall the words of former NASA Associate Administrator Mike Gold. He says, India's bureaucratic reforms in its space efforts are helping the country move faster in that sector. So, bureaucracy is not being obstructed. They are actually, the reforms are helping him to move faster. So, moving faster is not being an obstruction. So, we need to understand these reforms are taking place so that this kind of an approach where you are able to do decisions, take decisions in time is facilitating the bureaucracy. The National Science Foundation, sir, is not headed, I'm sure the minister was here, he spoke about it in the morning, National Science Foundation, with huge funds given for them to decide where that should be deployed, is headed by a scientist, Dr. Sood, if I'm right.
He heads it. No bureaucrat, no former IAS is sitting there. It is a scientist who is dealing with it. So I would like to highlight this, saying these reforms, therefore, will be transformative not just for India, but also for the US and the commercial space sector as a whole, is the observation we've heard from the former NASA associate administrator. So finally, we have, I think, the current government's policies have helped the power of youth, power of scientific community, and power of Indian startups all together are helping today's ISRO. I'm not taking more time, sir, in case you want me to conclude. There are now over 140 plus registered space tech startups, all of whom are doing brilliant work as a continuation of the policy which I said, Atmanirbhar Bharat 2021-22 budget, and now you have Indian Space Policy 2023 which has come out, and that is going to, it seeks to institutionalize the private sector participation in space sector, the establishment of InSpace, which is the Indian National Space Promotion and Authorization Center, is also facilitating the usage of ISRO by private entities. So with all these, government is also spending considerable amount to reskill nearly 4,000 technicians, technical and scientific assistants of ISRO, so that they can improve upon their skills. So I finally close with, again, one observation, that Indian scientists are not just being here, Indian scientists are not just being in ISRO, Indian scientists are contributing to space programs all over the world. However, how can we ever forget Kalpana Chawla, her contribution in the 1997 shuttle, the first woman of Indian origin to be in space. I would also now recall in January 2023, A.C. Charania has become NASA's new chief technologist, serving as principal advisor to the administrator Bill Nelson. Similarly, March 2023, we heard of Sri Amit Kshatriya, who's become the first head of NASA's newly established Moon to Mars program. So Indians in space, not just in ISRO, but all over the world. Thank you very much for giving me this opportunity. Two quick observations. Shri Jawahar Sarkar, who reflected as you indicated, has been a bureaucrat for 4 decades. And we have been liberal with time. As finance minister, please be liberal with finances. Everyone agrees on that. Dr. Prasanta Nanda. Thank you, Chairman, sir. Chandrayaan 3 rightly deserved this space and time in Parliament of India, and it has got in Lok Sabha and in Rajya Sabha also. Sir, all that you are seeing that the gallery was full, or the people everywhere in this country must be seeing this academic discussion of our Rajya Sabha regarding Chandrayaan 3 to listen about the total story of Chandrayaan 3 from 1962 till today. And in that deliberation, they must have been happy by listening to Srimati Nirmala Sitharaman ji and Jairam Ramesh ji and also other people. लेकिन इस बातचीत में, ये टोटल डिबेट में कौन किसी की नानी को याद कराने चाहते थे हमको नहीं मालूम, पर हमें इतना मालूम है
कि मुझे अपनी माँ याद आ गई। 74 साल पहले जब मैं खाना नहीं खाता था, मेरी माँ मुझे छत के ऊपर लेके जाती थी और कहती थी, बेटा मामा को देख ले, खा ले, नहीं तो मामा गुस्सा हो जाएगा, वो घर नहीं बुलाएगा। मैं खाना खा देता था, लेकिन घर नहीं बुलाते थे मामा, कभी घर नहीं बुलाया। और इसी दुख को दूर करने के लिए जो 62 साल से शुरुआत हुई, वो 23 अगस्त 2023 को हो गया। और ऐसा हुआ, जो निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी कि 100 वीमेन साइंटिस्ट, मैडम वो 100 साइंटिस्ट नहीं थे, 100 माँ थे, 100 माँ थे जो लाखों करोड़ों माँ को उनका वादा पूरा करा रहे थे, और उनका वादा पूरा हो गया। अब यहां हमको सिर्फ बोलना है उसी के बारे में, उन्हीं के बारे में। कौन किधर है, कौन पावर में है, कौन पावर में नहीं है, इसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। भाई देखिए, सीधी सारी बात है, एक रिले रेस चल रही है 4x400 मीटर्स। अब 4 आदमी भाग रहे हैं, जो फास्ट होता है, लेकिन ओलंपिक में मेडल मिलता है तो चारों को लेके खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं सबको मेडल मिलेगा। तो 62 से लेकर अब तक जितने साइंटिस्ट, जितने प्राइम मिनिस्टर इस पे लगे थे, मेरे हिसाब से सबको में एक मेडल चाहिए। दे डिजर्व इट, दे डिजर्व इट। और ये भी मैं बोलना चाहता हूं, आज अगर इसरो में जितने हैं, उसमें 16,000 फीमेल्स हैं, काम कर रहे हैं, मां हमारे हैं। और इसीलिए इसी सोच में आकर हम सोच रहे हैं, क्यों ना लोकसभा में और क्यों ना राज्यसभा में वो भी उतनी संख्या हमारे लेडीज आ जाएं, हमको चाहिए। अब अगर डबल इंजन की बात करते हो तो डबल इंजन यही होगा कि एक इंजन पुरुष है, दूसरा इंजन स्त्री है। अगर ये 2 इंजन काम करेंगे तो ये और बहुत बढ़िया होगा। सर, मेरा तो ज्यादा टाइम नहीं है, बोलने को बहुत दिल करता था और सुनने को भी ज्यादा दिल करता था, इसीलिए बैठा हूं मैं। बोलने का यह है कि देखिए, हमको आज यह है कि देखो, इतना पैसा तभी मिलता था और आज हम ज्यादा पैसा देते हैं। भाई मेरे पिताजी 30 रुपया उनको तनख्वाह मिलता था, हम आराम से खाते पीते थे, और उतना आराम करने के लिए अपने आज को 3 लाख रुपया लगेगा। तो डिवैल्यूएशन हुआ है पैसों का। तो पैसों का बात ना करें, दिल का बात करें और अक्ल का बात करें। अक्ल का बात करें तो 60 नहीं, 6000 साल पहले जो इंडियन वनवास करते थे, जो साधु थे, जो संत थे, वो भी साइंटिस्ट थे, और आज भी जो है वो भी साइंटिस्ट है। सब साइंटिस्ट है, कोई किसी को कोई पैसों की जरूरत नहीं है, उनको एकाग्रता की जरूरत है। और जितनी एकाग्रता देश उनको चाहता है, तो उनसे उन्होंने हर काल दिया है। हमको वेद दिया है उन्होंने, उपनिषद दिया है, गीता दिया है, और आज चंद्रयान भी दे दिया। वही साइंटिस्ट लोग हैं, उनका नाम बदल गया है, लेकिन उन्होंने दिया है। और इसमें मेरा इतना कहना है कि हम आए हैं ओडिशा से। सबको लगता होगा ये छोटा एक है छोटा, इतना बड़ा नहीं है, पर है। हमारा भी इसमें कोई हम साझेदारी है, और हमारा भी सुन लीजिए कहानी कि हम भी इस यात्रा में कैसे जा रहे हैं। सर, जिस ओडिशा के बारे में जब बोल रहा हूं, 1984 में ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ORSAC, the apex body of the state of Odisha for space technology applications, was established 1984, sir. Along with space tech, ORSAC is involved in IT projects like remote sensing, GIS and GPS based projects, geographic information system, and global
positioning system. The organization also runs GramSat and EduSat. Then I am telling you, in 2017, Odisha government formally named the outer Wheeler Island in Bhadrak district of Odisha as APJ Abdul Kalam Island. उसका नाम दिया है APJ Abdul Kalam Island as a tribute to the former president on his second death anniversary. Former Chief Minister Biju Patnaik, sir, 1 minute. Former Chief Minister Biju Patnaik had alerted the historic Wheeler Island to the Ministry of Defense on the request of Kalam in 1993. Kalam had once described the Wheeler Island as his theatre of action. He said, "It is my theatre of action." Kalam also played a key role in ensuring that the island, a nesting ground for the endangered olive ridley tortoise, remained safe by changing the illumination structure. और लास्ट में इतना है, हम उड़ीसा के लोग इतना चाहते हैं कि ये हम कर सकते हैं. क्या है ना, if everything goes well, a made in Odisha miniature satellite CubeSat will soon support the state in managing natural calamities like cyclone and enhancing cyber security. जिस साइक्लोन से हम लड़ रहे हैं, साल में 10 बार लड़ रहे हैं, उस साइक्लोन को, उसके लिए जानकारी के लिए वो जो सैटेलाइट होगी, ये ओडिशा की अपनी होगी. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम भी ये जो यात्री है, ये जो सफलता है और ये जो गोल्ड मेडल सब लोग लेने के लिए खड़े हैं, उसमें हमारा भी शामिल है, ओडिशा का भी. हमने भी कुछ प्रतिदान दिया है, ओडिशा के औरतों ने भी कुछ प्रतिदान दिया है. और इसी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समय नहीं है, फिर भी इतना याद रखिए, ये एक नेशनल गर्व है. दिस इज द प्राउड ऑफ आवर नेशन. This is the day of the scientists who have made it. So please conclude. I am concluding. This is a concluding chapter again. अभी Now I have to call the next speaker. अभी मैं ये बोलता हूँ, अभी ये हो गया तय कि आज हम गर्व से छाती उठा के बोल सकते हैं कि कितने देश है जिसमें हमको बोल सकते हैं कि इंडिया इज नॉट at all comparable to other scientists. We can and we say that हमारा जो अगले जो है गगनायन है या हमारा जो आदित्य है वो भी आएगी और वो भी करके दिखाएगी इंडिया क्या चीज है. उस दिन के लिए इंतजार करें. जय जगन्नाथ. नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर एम थम्बीदुराई. Thank you, Vice Chairman, sir. On behalf of ADMK party, I like to participate in the discussion on India's glorious space journey marked by successful soft landing of Chandrayaan-3. Vice Chairman, sir, from morning onwards, we listened from the most of the speakers. First initiated by the Industry and Commerce Minister. It's the Industry and Commerce Minister. He started. Then afterwards, Space Minister also intervened in that. Then afterwards, Finance Minister. She also intervened in that. Now we are fake end of that. We are going to participate in that. I am thankful for that. But Chandrayaan journey, that first Chandrayaan-1, Chandrayaan-2, Chandrayaan-3, all are described by the various people. It is a success for Indian scientists. We have to remember all the scientists like Sir C.V. Raman, Nobel laureate, is the man who gave this kind of physics, that is the science. That is the base for our things, for all development that we have to think about Dr. Sir C.V. Raman, Nobel laureate. Next, we know Vikram Sarabhai, Homi Bhabha. Abdul Kalam studied in MIT in Chennai, you know very well.
that is famous institute, where our Chennai is the base for education also. In that place he studied. And also, as others said, there are so many people contributed the development of this space research. 100 women scientists also participated. And also, so many prime ministers done so many efforts. But our Prime Minister, Narendra Modi, in his period is successful over. That is why, when many of the people appreciated our Modi ji, then during, and also it is a success in his period, Chandrayaan 3 safely landed and started research and gave so many information to our country, through the world. That is why we are appreciating. And also, our minister, space minister, when go on explaining about education, also very important thing for the success of thing in India. Before education, super beliefs are there. Super beliefs, everything explained in the health and even material work, whatever things have superstitions are there. But all these are removed. Your time is over, sir. So what is time is over? Can't understand. Just say a few minutes, please. This is not, because we are by, say, 4 members or party, single members all spoke. But now time is now ending time. Sir, and also, I'm telling you, come to the point. This is embarrassing to us. I was senior presiding officer of Lok Sabha, 5 times Lok Sabha member. When I'm speaking that, I know the sense of the house. Then when I'm saying something, because this is a successful story we are explaining, means when starting itself he is over, means how can I conclude that? Please listen to me, sir. When whatever say, okay, I want to restrict that. The success of education, what he said, at that point, only point I want to say, education means science education, also very important. Especially in Tamil Nadu, Dravidian movement is the root cause for the giving good education for our country. That is why, even in the name, in Chennai, Gindi Research Center, Periyar Kolarangam, that is Periyar Space Research Emporium, as established. Why I am telling is, where the space things, whatever developed in the country, whatever journey, that is successful technique. And also technical education, if you take Professor MGR, our founder leader of the ADMK party, who started many education institutions, especially technical education, IITs and ITIs, so many polytechnics. That kind of science education is given. That is why so many scientists you have to create, especially the Tamil Nadu people. I want to mention, because the name of the people we have said, we are for Veeramuthu has come. Veeramuthu, well said, our minister said, then Vanitha Muthaiya, then Sir, you have Abdul already Kalam, taken 2 Nega minutes Shaki, extra. so many people are educated, means because of good Please education conclude. given by Tamil Nadu. Thank you. They all contributed the space journey. And also, once again, I thank for our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. In his period, it successfully taken place. And also, I thank other Prime Ministers also, others also, and scientists, Indian scientists, who contributed so much for that. I thank you very much. I thank you. Sir, at the very outset, let me start by congratulating heartily our great scientists who successfully executed the Chandrayaan 3 mission, making India the first nation to land on the South Pole, near the South Pole of the Moon. Sir, our scientists worked hard for the success of Chandrayaan, and just at the crucial moment when the Chandrayaan was about to land, the entire nation was deprived of the chance of seeing the landing, or our scientists congratulating each other, because the official TV feed got cut to a video showing the PM waving the national flag. It's shameful, sir. The camera was turned on the PM while the nation waited with bated breath to see the actual landing of the video and the celebration of our scientists. Sir, the scientists, I reiterate, were the real heroes, because despite the Department of Space having a budgetary cut of more than 8% this year, compared to the last fiscal of 22-23, which in turn had an expenditure cut of 32% for the space science part, notwithstanding the fact that Chandrayaan 3 and Aditya L1
these missions were included in this. Sir, I would also, that's why I say that this is the very reason why I laud our heroes, our scientists. Minister, And Bengal has played a part in it. As you know, 31. One second. No, no, I didn't want to interrupt him because he's speaking in a good flow. Sir, I'm not I leaving. just One wanted second, to one put second. the record straight. When the PM was shown on the screen, the other part of the screen shows the landing. So it is not. No, no, no. No, no, no. The whole nation is a witness to. The whole nation is witness to that. The whole nation is witness to that. You can get it replayed. Yes, the Sir, video, the video is there. Why? It is for all to Just see. because. What is the Just truth? because. What is the truth? Just Let the because nation PM, decide. just Sir, because sir, the PM's video face is, was there does not mean that the landing was not shown. Honorable Minister, the video is there. Let the nation decide. Yes. Let it The for whole nation nation decide, has sir. been The video is witnessed. there. It is in public No, domain. no, no. The video You are is there. you are stating half truth. Anyway, PM's face Chairman, was sir, there, Vice but the Chairman, landing sir, my was also time is being being shown. eaten into. Please. It Sir, was he's interrupting my time. simultaneously being shown. It was being simultaneously shown. Sir, I am Please not, understand that. sir, I am Even- not yielding. I seek your You're protection, not sir. understanding. Sir, how is it? Sir, Chairman, Vice Chairman, sir, I seek your protection. I am not yielding. I am Please saying let me have my even chance to speak. even before PM's face came, our faces were also there. Vice They were Chairman, showing, sir, they, Vice Chairman, Chairman, sir, my sir, they time were is showing being eaten into. they were showing the He'll be team, given time. No, don't worry. the team ISRO was there, the mission team was there. We were watching from one location. We were there, and that slot went to PM. Where Sir, he I am was not there. yielded. But Please the give me landing my was chance to continuing speak. simultaneously. Mr. Biswas, continue. Sir, much of my time has been eaten into. You please give me the due time. Firstly, I'll say it is on public domain and it is for all to see and decide. Okay? Sir, I would like to say, since I laud the scientists, 31 of them, we proudly say, have come from Bengal as part of the mission. And as you know, Anuj Nandi, he was from Islampur of West Bengal. He also played a very crucial role in this mission, working as the chief designer of the cameras attached to the primary body of Chandrayaan-3. Sir, also, I would like to say that after meeting the ISRO scientists in Bengaluru, the Honorable Prime Minister landed in Delhi and made a bizarre statement. He said, use of space technology for delivery of services. This statement has not been clarified as yet. And then we see the Governor of Bengal wrote to ISRO asking for help of space technology to curb ragging of students in colleges. Sir, it is most astonishing to see and agonizing also the achievements of our scientists being mocked in such illogical statements which seeks to take away their success and seems to undermine them. Sir, further, I would like to say that during the 2019 Lok Sabha elections, our Honorable Prime Minister was suddenly seen addressing the nation on Mission Shakti. The sole purpose was to take credit for success of our scientists for political and electoral gains. Again, sir, from speech of the leader of the House today, it seems that the government doesn't want to focus of today's discussion to be celebrated as one of our scientists and our space program, but of a personal credit festival for the PM and only the PM. Let us move past the self-congratulatory and chest-thumping postures and stand up as a nation to the dual heroes, our scientists. Sir, all I have to say while I conclude is that while we have our eyes on space, let our feet touch the ground reality, discussing nation-related harsh realities of price hikes, unemployment, MSP for farmers, Manipur, recent CAG reports, etc., which seriously concern the people at large. Let there be a celebration, but also along with introspection, if as a nation we want to move forward with much more such achievements and phenomenal successes. Thank you, sir. Shri Sanjay Rautji. Thank you very much, sir. Sir, we are discussing on India's glorious space journey. ये जो जर्नी है बहुत ही गौरवशाली है। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है। प्रधानमंत्री भी आए और चले गए।
लेकिन इंडिया की ये स्पेस जर्नी निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। ये पंडित नेहरू वर्सेस नरेंद्र मोदी ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप वहाँ से मोदी मोदी करेंगे, हम नेहरू नेहरू करेंगे। ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। 2014 से पहले भी इस देश में बहुत बड़ा काम हुआ है और उसके बदौलत आज चंद्रयान ऊपर गया है। प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है, प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है। कोई विज्ञानवादी होता है, कोई अंधश्रद्धावादी होता है, कोई अंधभक्त होते हैं, कोई भक्त होते हैं। पंडित नेहरू जी के जमाने में भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। लेकिन ये भी विज्ञान है, मैं नहीं मानता ये विज्ञान नहीं है, ये भी साइंस है। गटार से भी हम गैस निकाल सकते हैं, ये भी साइंस है। लेकिन पंडित नेहरू की सोच ऊपर थी। पंडित नेहरू ने इसरो बनाया। पंडित नेहरू ने जिस तरह से ज्ञान, विज्ञान और तंत्रज्ञान की नींव रखी और आज हम 70 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी अद्भुत है सर। और ये जो यात्रा है, ये यात्रा चंद्रयान 1 से शुरू हुई थी, चंद्रयान 2 में भी जारी रही और चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा है। ये हमारे 60-70 साल के टीम वर्क का नतीजा है। ये जो हमारा ऐतिहासिक पुराना संसद भवन है, उसमें जो आखिरी संयुक्त बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और सांसदों के साथ पैदल चलकर यहाँ तक आ गए, नए संसद भवन में आ गए। 1947 से हमारी सफ़र, इस देश की सफ़र इसी तरह से हो रही है। पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उस वक्त इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, कुछ नहीं बनता था, और आज हम हमारा चंद्रयान ऊपर भेज रहे हैं। सर, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। सर, मैंने कहा कि यह गौरवशाली यात्रा है। आज इसरो भारत का गौरव है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। विक्रम साराभाई जी के बारे में जयराम रमेश जी ने कहा, पूरी कहानी सुनाई। विक्रम साराभाई इसरो के उस वक्त टीम लीडर थे और उनकी टीम भी बहुत छोटी थी। बहुत गिने चुने वैज्ञानिक उनके पास थे, पैसों की तंगी थी, लेकिन साल भर में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया और उसके पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया था। वो ऐतिहासिक तस्वीर आज भी हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े कर देती है। और आज 6 दशक के बाद हम चांद पर, मंगल पर और गगनयान, ये सब जो देन है सर, ये हमारी देश के 60-70 साल में हमारे पंडित नेहरू से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री मोदी जी की। सर प्लीज, मैं सबका नाम लेना चाहता हूं। सर, प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, मजबूत भारत बनाना है। बड़े सोच से ही भव्य मजबूत भारत का निर्माण होगा। सोच बड़ी होगी तो बड़े काम हो जाते हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी के सिवा ये देश आगे नहीं बढ़ेगा।
लेकिन हमने कोरोना काल में क्या देखा? पापड़ बेचो, थालियां बजाओ, तालियां बजाओ। दिस इज नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। ये साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे इस देश संजय के राउत जी प्लीज वैज्ञानिकों ने कंक्लूड। संजय राउत जी प्लीज वैक्सीन बनाया। कंक्लूड। इस देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया और वैक्सीन बनने के बाद संजय राउत जी प्लीज कंक्लूड। प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपना फोटो लगाकर प्रचार किया। थैंक यू संजय राउत जी, प्लीज कंक्लूड। हमको आदर करना चाहिए हमारे साइंटिस्ट का, हमारे विज्ञान का, हमारे टेक्नोलॉजी का। थैंक यू। सर, नेक्स्ट स्पीकर। सर, ये देश बहुत बड़ा है। प्लीज कंक्लूड। यू हैव टेकन सर, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स। साइंस टेक्नोलॉजी ये राजनीति करने का विषय नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय है, लेकिन कुछ लोगों ने इस विषय में भी राजनीति लाई। हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तेलंगाना वर्सेस आंध्र का झगड़ा लगा दिया। ये कब तक चलेगा सर? डॉक्टर अनिल जैन। सर, आज के इस मौके धन्यवाद उपसभापति महोदय। लोकतंत्र के इस ऐतिहासिक प्रथम सत्र के लोकतंत्र के इस नए मंदिर के ऐतिहासिक प्रथम सत्र के दूसरे दिन मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और इस नए लोकतंत्र के मंदिर से भव्य भारत की नई तस्वीर निकलेगी। महोदय, भारत के लोकतंत्र की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री ने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये भव्य लोकतंत्र का मंदिर प्रस्तुत किया है और यहाँ से नई भारत की तस्वीर निकलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अमृतकाल की सुबह हमारा भारत नई संसद भवन में भविष्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मान्यवर, आज पहले हम कहते थे चलो दिलदार चलें, चांद के पार चलें। हमारे साइंटिस्ट ने कहा चलो हम हैं तैयार चलो, और साइंटिस्ट ने तैयार चलो कर चांद के पार पहुंचने का काम किया है। मैं इस पूरे सदन के माध्यम से और अपनी तरफ से इस देश के साइंटिस्ट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और ये परंपरा जो विक्रम साराभाई जी ने प्रारंभ की, तब से लेकर आज तक चाहे एम्स सोमनाथ तक ये परंपरा जिस साइंटिस्ट ने की है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उस नेतृत्व का भी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, जिसने साइंटिस्ट को ये करने के लिए माहौल प्रस्तुत किया, व्यवस्थाएं दी, बजट दिया। ऐसे प्रधानमंत्री का भी हम वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हम सत्य के चांद के पार तो जा चुके हैं और ऐसे चांद के पार गए। अब तक हिंदुस्तान के साथ 3 और देश ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, लेकिन चांद के पार जाकर साउथ पोल तक पहुंचने का काम हमारे देश के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को पहुंचाकर किया है। ये केवल और केवल भारत ने किया है और भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है। हम सब लोग गौरवान्वित होते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बाद बना और चंद्रयान 2 के साथ में जब देश ने देखा चंद्रयान 2 किन्हीं तकनीकी कारणों के कारण अंतिम स्थान तक नहीं पहुंच सका, तो उस समय के इसरो के डायरेक्टर सेल्वन साहब जब आंसुओं से विवल हुए थे, तो उनको कंधा देने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया था और उन्होंने हौसला बढ़ाया साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया कि वैज्ञानिकों हम तुम्हारे साथ है, चट्टान की तरह पीछे खड़े हैं और तुम आप आगे बढ़ो, हम चंद्रयान की सफलता को भी देखेंगे। चंद्रयान 3 का ये कॉन्फ़िगरेशन
मिशन प्रोफाइल तैयार की गई। चंद्रयान 3 को प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर मॉड्यूल से कॉन्फ़िगर किया गया है। इसके प्राथमिक उद्देश्य हैं चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग, इसके चंद्रमा की सतह पर घूमना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का दुनिया से परिचय कराना। चंद्रयान की लैंडिंग भारत की स्वदेशी तकनीकी शक्ति का प्रदर्शित करती है। इसके वैज्ञानिक मनोवृत्ति को नई शक्ति प्रदान करती है। चंद्रमा पर की लैंडिंग की सफलता के साथ हमें उम्मीद है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की कंपनियां नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ेगी और अन्वेषक, घटक निर्माण, नेविगेशन, मैपिंग, अवलोकन डेटा, विभिन्न गतिविधियां जिसमें शामिल हैं। चंद्रयान 3 के सफल समापन से भविष्य के सहयोगी मिशनों और अंतरिक्ष अन्वेषण में लगे अन्य देशों के साथ भारत के साझेदारी के द्वार खुलेंगे और भारत वैश्विक अंतरिक्ष पहलों में सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा और भविष्य के गहन अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों में योगदान दुनिया को दे सकता है। सितंबर 2015 में राष्ट्रीय बैठक के बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग 60 मंत्रालयों तक बढ़ाया गया, जो कि पहले कुछ मंत्रालयों तक सीमित था। अब औद्योगिक प्रौद्योगिकियों का 60 मंत्रालयों तक इसका उपयोग बढ़ाया गया। मनरेगा, पीएमजीवाई, पीएमकेएसवाई, अमृत, पीएमएफबीवाई, स्वामित्व, यूआईडीएआई आदि सभी जनभागी कार्यक्रम बेहतर प्रशासन के लिए अंतरिक्ष डेटा का उपयोग कर रहे हैं। हमारे सूर्य मिशन आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी भेज दी है और वह सूर्य देव के चक्कर लगा रहा है। आदित्य सूर्य के क्रोमोस्फीयर, कोरोना और हेलियोस्फीयर के में सूर्य के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। यह सौर वायु और ज्वालाओं पर भी नजर रख रहा है ताकि हमारी अंतरिक्ष संपत्ति सुरक्षित रह सके। इस सदन के माध्यम से मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो को देश के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं, जो हमारे देश का पहला मानव मिशन होगा। हालांकि उसमें पहले अनमैन्ड जाएगा, फिर जिसमें अंतरिक्ष यात्रा करने वाली व्योममित्र नाम की ह्यूमनॉइड महिला रोबोट, उसके बाद मानव रहित और अंत में मानव मिशन सफल होगा। ऐसे में भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों पर संसद में बोलना मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि पूरे विश्व में लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज पूरा विश्व जानने को बेताब है आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी हुई कि भारत में जिसका उपयोग पिछले 9 वर्षों में अंतरिक्ष की ओर इतनी लंबी छलांग लगाई। भारत के अंतरिक्ष में लगाई गई इस छलांग का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि इसरो की काबिलियत और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने बड़ा काम किया है। आज वर्तमान केंद्र के सरकार के कार्यकाल में पूरा भारत अपने सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए सरकार ने उसे अपने सामर्थ्य को सदुपयोग करने के लिए उचित माहौल उपलब्ध कराया है। हमारे यहाँ चंद्रयान 3 से पहले की ये बात है, रखकर चांद के उस पार कदम, रखकर चांद के उस पार कदम, आज हम इतिहास बना देंगे और जिनको शक था हमारी काबिलियत पर, आज उन सबको गवाह बना देंगे और सारा विश्व भारत का गवाह बना हुआ है चंद्रयान की सफलता के लिए। महोदय, वर्तमान केंद्र सरकार ने 2014 के बाद से स्पेस सेक्टर में बजट में 150% की वृद्धि की। महोदय, वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में भारत के स्पेस सेक्टर में सफलता की कहानी चंद्रमा पर पहुंचने जितनी ही दिलचस्प है और उल्लेखनीय भी है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनकर जो इतिहास बनाया है, वह मोदी सरकार द्वारा किए गए कुछ ऐतिहासिक सुधारों और इसरो को केंद्र से मिलने वाले समर्थन के कारण भी इसमें योगदान है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और हमारे महान वैज्ञानिकों को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। महोदय, इसरो ने कभी पहले हम कभी पहले तुम, ये तो चलता ही करेगा। महोदय, इसरो ने 2014 से पहले केवल 35 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए थे। ध्यान रखें, 2014 से पहले केवल 35 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए थे और 2014 के बाद इन 9 सालों में 389, एक कम 389 उपग्रह लॉन्च किए हैं और इन उपग्रहों के लॉन्च करने से
भारत को 3300 करोड़ रुपए की आमदनी भी हुई है इसरो को। ये काम 9 सालों में हुआ है। जो 35 थे 60 सालों में, और 9 सालों में 389 हुए हैं। सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के लिए बजटीय आवंटन 2013 में 5,615 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ाकर 2023-24 में 12,543 करोड़ किया है, 3 गुना किया है। मान्यवर अंतरिक्ष महोदय, अंतरिक्ष में भारत की सफलता की कहानी को समझने के लिए केंद्र के उन 6 मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझना होगा। जो सरकार ने 6 मार्गदर्शक सिद्धांत रखे, उनमें है निजी उद्यमों को सक्षम बनाना, स्वतंत्र अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देना, तीसरा इसरो के बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को मजबूत करना, सार्वजनिक क्षेत्र को अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, अंतरिक्ष संपत्तियों के विकास के लिए मांग संचालित दृष्टिकोण अपनाना, और छठवां युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना। इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी देना। 2022 में भारतीय अंतरिक्ष नीति बनी थी, 2023 में इसको मंजूरी हुई। भारतीय अंतरिक्ष संघ के साथ इन स्पेस ई का गठन करना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जिन्होंने केंद्र सरकार ने 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन किया, और इसका काम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रचार वाणिज्यिक दोहन का है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है। वर्ष 2017 में PSLV C-37 ने एक साथ 104 उपग्रह छोड़कर पूरी दुनिया में भारत ने रिकॉर्ड बनाया। 104 उपग्रह 2017 में PSLV C-37 ने छोड़े, और ये विश्व रिकॉर्ड बना जो भारत के लिए, भारत के नाम दर्ज है। और इस प्रकार भारत की स्पेस यात्रा में इन 9 सालों में ये काम हुए, बड़े काम हुए। महोदय, सरकार के इन प्रयास से 2023 तक स्टार्टअप की संख्या 140 हो गई है, जो कि पहले 4 थी। स्टार्टअप्स अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुल 4 थे, और इन 9 सालों में 140 स्टार्टअप्स हुए हैं। आज अंतरिक्ष उद्योग का विस्तार $16 बिलियन हो गया है, और ये विस्तार 40 बिलियन डॉलर की बात हुई, और अंतरिक्ष और अन्य देश के लोग इसको $100 बिलियन तक कहने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहा है। पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने अंतरिक्ष जगत की बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री के देश के युवाओं को हमेशा से बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। जब देश के युवाओं ने अंतरिक्ष के सपने देखने शुरू किए तो उन्हें उचित संसाधन उपलब्ध कराए। सरकार ने उनके सपनों को पंख दिए। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि SSLV D3 से 3 उपग्रह लॉन्च हुए, और इन तीनों की लॉन्चिंग में 750 छात्राएं, इन तीनों की लॉन्चिंग में 750 छात्राएं इन्होंने योगदान दिया, और ये प्रधानमंत्री के युवाओं को प्रोत्साहित करने का कारण हुआ। महोदय, पिछले वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े देश के अलग अलग संस्थानों में 603 छात्रों ने एडमिशन लिया, और इन छात्रों को 100% प्लेसमेंट की गारंटी दी गई। और ये संस्थान त्रिवेंद्रम में, जम्मू में, अगरतला में है। यह केंद्र का भावी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की नई पौध तैयार हो, इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह है दूरदृष्टि। वर्तमान में भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2 से 3% का योगदान देता है, और आगे आने वाले 5-6 साल में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत एक महाशक्ति बन जाएगा। भारत अब नासा के नेतृत्व वाले समूह से जुड़ गया है, और अब नासा और भारत मिलकर एक साथ कई अंतरिक्ष खोजों पर काम कर रहे हैं। इससे एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर को भी बड़ा लाभ होगा। चंद्रयान 3 की सफलता से ही अंतरिक्ष अनुसंधान, इंजीनियरिंग और संचार के क्षेत्र को लाभ मिलने जा रहा है। मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा एक सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम एस प्रारंभ मिशन का प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विक्रम एस का प्रक्षेपण भारत और दक्षिण एशिया में लॉन्च किया गया पहला
निजी तौर पर निर्मित रॉकेट बनकर भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये प्राइवेट क्षेत्र से है, भारत ने इनको प्रमोट किया है। महोदय, अंतरिक्ष में भारत की सफलता का लाभ पूरी मानवता को मिलेगा, ऐसा वादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत समस्त मानव जाति की भलाई के लिए खोज, सीखना और जानकारी को साझा करना जारी रखेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2015 में राष्ट्रीय बैठक के बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग 60 मंत्रालयों तक बढ़ाया गया, जबकि ये पहले केवल 20 मंत्रालयों तक ही सीमित था। जैसा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी का मत है कि प्रेरित कार्यबल, स्वदेशी क्षमताएं, उत्साहजनक माहौल में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अवसर असीमित हैं। इसलिए इसमें न केवल घरेलू बल्कि विश्वव्यापी बाजार में भी तेजी से प्रवेश करने की क्षमता है। अंत में मैं सदन को बड़े ही गर्व के साथ कहता हूं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और साथ ही हम दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं में भी के समूह में भी शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं सदन के माध्यम से और स्वयं अपनी तरफ से इस देश के वैज्ञानिकों का चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा वातावरण इस देश में बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री Kanakamidala Ravindra Kumar. Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity, sir, to participate in the discussion on India's glorious space journey marked by successful soft landing of Chandrayaan 3. Sir, August 23rd of this year is a remarkable and historic day for India. The scientists of ISRO were successful in making Chandrayaan 3 lander to land in Moon's southern polar region. After the rover started its journey, undertake research at the designated place. The successful launch of Chandrayaan 3 made India the fourth country after Russia, USA and China to make successful soft landing in Moon. Landing and lander and sending rover to study the southern region of the planet is a unique achievement that the India have achieved. This achievement came to and the first two missions, Chandrayaan 1 and 2, did not bore desired result. The Chandrayaan 2 mission was almost going to be successful. Unfortunately, we lost the communication from the satellite. The visionary scientist Vikram Sarabhai made all-round efforts to make ISRO as a force to rocket. Sir, Chandrayaan 3 was launched with the launch vehicle mark. Whenever there is a mention about the launch vehicle 1, we cannot forget the contribution made by late Sri Abdul Kalam, who had been rocket scientist in ISRO and later became Honorable President of India. It was due to the tireless and sustained efforts of India has its own launch vehicles of varying types. He is considered to be a pioneer of satellite launch vehicles. In order to give befitting recognition to him, he was elected as the President of India. It is also an important point to be noted that our party leader, Shri Chandrababu Naidu, played a pivotal role in suggesting candidature of Abdul Kalam and ensuring his winning in the election. From its humble beginning to the present status, the launching of Sriharikota in my native state, Andhra Pradesh, ISRO made great leaps. In the recent past, India has become more desired destination of launch satellites. Almost all the countries throughout the world are seeing India desired destination of ISRO, their trusted partners. Sir, I take this opportunity to congratulate the scientists, project head of Chandrayaan 3 and other for their grand success. Sir, in this occasion, I have to discharge my duty. My friend Mr. Vijay Reddy has raised irrelevant and irresponsible comments on my leader TDP president, and my friend has, and his chief minister Jagan Mohan Reddy are accused in 21 corruption CBI and ED cases. They were behind bars for 16 months in corruption cases. My friend and CM involved in some other cases also. The efforts in view of the CBI and ED cases, and they were in jail for about 16 months, and they have
foisted a false case against Chandrababu Naidu. Please stick to the alleging topic. that a skill development in the 317 crores was misused. As the Chief Minister of Andhra Pradesh, the then Chief Minister of Andhra Pradesh, he sanctioned a skill development project and 371 crores was incurred. Now, since they are accused in corruption charges, they wanted to malign our leader Chandrababu Naidu as an accused in this case. They put behind bars. The another important issue, sir, the Chandrababu Naidu has been investigating cases. They have no relevance. CBI and DD investigated against them, and they have an accused. Honorable Vice Chairman, sir, in this occasion, I wanted to say that the Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy and my friend Vijay Sai Reddy were floated so many companies, amazed wealth of 43,000 crores by taking advantage of his father as a Chief Minister. Now he is involved in huge crores of scams. In order to divert the attention of the public, he posted a case against Chandrababu Naidu. Okay. Namaste. Upasabhapati ji, the whole nation is elated about the success of Chandrayaan 3, and I rise to congratulate the scientists for the success of Chandrayaan 3. I would also like to congratulate Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for providing leadership to the success of our space agenda, and also for the encouragement to the scientists. I think one statistic that will surprise everyone is the budget with which we have achieved the success of Chandrayaan 3. We have spent only 600 crores on Chandrayaan 3 mission, while Russia, which launched their lunar mission around the same time, which did not succeed, they spent 16,000 crores. So that tells us how effectively, how cost effectively we have launched our space mission. So, in the speeches of some of our opposition friends, particularly Sri Jairam Ramesh, rather than elation, I saw a sense of disappointment and a jhalak of jealousy. I think they seem to somehow not join the whole country in this celebratory mode. They said the space journey has not begun in 2014. We have never made that claim. This government has never made the claim that the space journey began only in 2014. But for the Congress party, the journey begins with one family and ends with one family. You see, I was a little disappointed that Mr. Jairam Ramesh, One second, Srimati Jaya Bachchan. One second. Yes, Srimati sir. Jaya Bachchan. Sir, I'm not yielding. Please. Chairman, Vice Chairman, sir, I'm not yielding. Let me... One second. श्रीमती जया बच्चन। सर, मैं जयराम रमेश जी को बधाई देती हूं कि जितनी बार इन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया इन पार्टी ने, उतनी बार इनका भी नाम ले लिया। नरसिम्हा राव जी, प्लीज कंटिन्यू। Sir, I'm disappointed that Mr. Jairam Ramesh forgot to take the name of Dr. Manmohan Singh, in whose government he was a minister. I think, how can anyone be so ungrateful? He did not take the name of even P.V. Narasimha Rao ji, who was Prime Minister, and he made his political debut. Mr. Ramesh made his political debut when Mr. Narasimha Rao was Prime Minister. I think for the Congress party, they have a different G20 slogan. Our G20 slogan is one earth, one family, one future. For the Congress party, their slogan is, please listen, I think you will be happy to listen to this.
The Congress party's slogan is one family, one Please stick past, to the point. one future. Please stick to the issue. The Please Congress stick to the slogan issue. is one family, one past, one future. It ends with one family. So Prime Minister Narendra Modi ji, how he gave a strong impetus to the space program in this country. Mr. Narasimha Rao, please How stick he to the gave issue. us a huge impetus to the program. He had made it clear. Look at the transition of this country. In 2014, the Congress party claims it's all a continuum. It's not just a continuum. In 2014, we were one of the 5 weakest economies in the world. Fragile 5. We were called one of the 5 fragile economies of the world, and today we are the 5th largest economy of the world. So, certainly, what the Congress claims, their claims are completely absurd and not based on reality. This country has begun the real journey, the real development of this country. The speed, the scale has started only after 2014. Sir, we all know the dictum. Success has many fathers, failure has none. Sir, the Congress party, I think in today's context, it's even more relevant. Even before the Women's Reservation Bill was introduced, we had the Congress party claiming, "Ye hamara baby hai, hamara baby hai." If it was your baby, why did you not nurture the baby between 2010 and 2014? So, the Congress party has only fraudulent claims to make, and it does not have the real. Sir, after the failure of Chandrayaan-2, Prime Minister, not as a... एक second. As it is already 6 p.m., if the House approves, we will continue till the debate ends. Please continue. Thank you, sir. Sir, Modi ji is not a politician like the country had seen in the past. He is truly a statesman. That is the reason why he, after Chandrayaan-2, he motivated the scientists. This is what he said. After the loss of contact with Chandrayaan-2 lander Vikram, Prime Minister said, "We are with you. The country is with you. Every obstacle teaches us something new. It inspires us to do more." Prime Minister said there is no failure in science. There are only experiments and efforts. This is what a truly statesman. Please conclude. Sir, I think I need, please give me 3 more minutes. Sir, I have a few more important points to make. Please conclude. Already you have taken extra time. Please conclude. We have, in 2000, as part of the Atmanirbhar vision, government came up with a new space policy which allowed participation of the private sector and massive investments. We came up with what is called a space policy, Bharatiya Antariksha Niti 2023. And the Antariksha Niti, this policy clearly outlined the vision of the country. Thank you. It created the institutional framework. It provided the ecosystem for the space industry, the space industry to flourish. So, let me just conclude by saying this. A spurious dichotomy was sought to be drawn between nationalism and development. It is not a dichotomy. Sri Binay Vishwamji. Nationalism... Sir, my time begins now. Sir, in the name of Communist Party of India, I salute the
scientists, the employees, and the workers who shed their dreams, their blood, their sweat, everything for the success of Chandrayaan-3. Sir, Chandrayaan-3, of course, is a great, great, victorious moment for this country and for the whole world, I say. Before I come to the Chandrayaan part, let me make on record one point. That's regarding the incident that happened in this house, the old building, the last day of the old building. On that day, when this house discussed the 75 years voyage of the Indian Parliament, the Communist Party of India, the TDP, the RLD were not allowed to speak. And the SP also was denied the time. And the TMC was also, half the time was denied to them. Sir, this is not the way, not the real way to run a meaningful parliament. We talk about great, great things, but when the action comes, we forget it. So I register my protest with all seriousness in this house. Sir, I remember a moment when a scientist of the world-renowned fame, that is Vikram Sarabhai, going to a bishop in Trivandrum. And that bishop's name was Bishop Pereira. He went there. Tumba is a place with its own geographical importance. On the equator it stands. It has the magnitude which has some relevance on scientific launching. So the plea was that allow us to build a launching place somewhere near the church. The bishop responded, I cannot say it my own. Let me give some time. You come tomorrow. I will have a meeting with my people here. The next day morning when he came there was a big gathering there. To that gathering, Bishop Pereira told, he is a scientist of renowned fame in the country. He is so and so. He came with a request to you that he needs some place from our property to have a scientific center for launching a rocket from here for the country's future. What will you say? The common people, the fishermen, after 1 minute silence, all of them said in one voice, Amen. Amen means we are for that. Thus began the Tumba rocket launching station. Sir, I had the privilege or honor to be that center many a times. And all of them, right from Somanathan, and I don't name the whole names list because I know many of them very closely. All of them are my friends. A very good team of people, dedicated they are. They are committed for science and for the country is invaluable. And they made this record. So that record is the record of a human endeavor, collective and dedication. It's a very sorry thing to hear that all those achievements of those great people and of science to be minimized to the name of a single man. I know the Prime Minister is great, but always singing glorious for the Prime Minister. The name of Chandrayaan, I don't think it's a scientific way of doing things. So I registered that part also here. Sir, science is for what? Science is for progress, for social progress, for man's progress. ISRO has proved that it has the ability to help the country in so many ways. I remember years back, when I was the Forest Minister of Kerala, we discussed with them the questions of forest fires. A team of them came to the forest headquarters. We sat with them for 2-3 hours, and they Sir, 1 minute, sir. Sir, last time also our party was in at the time to speak, and now just I began.
Please, carry on, carry on. So, and Sir, you have already taken your 5 minutes. I had Please the experience that the ISRO team helped the Forest Department of Kerala to find a possible solution to prevent the forest fires. In such a way, in all sorts of the human life, science has to help us. ISRO is doing that help. Sir, but the funds for ISRO, that has to be considered very seriously. Sir, that part is being neglected by the government. I request you and to the government also, please take it seriously that the funds to ISRO has to be increased because that great institution has to do a lot for the country and its future. Sir? Thank you. Please conclude. Sir. India is a country of great advancement, but a country of poor people. The people are poor, sir. And 1% of the population is still controlling 80% of the wealth of the country. Shame. In such a country, we need that the people of the country should be fed properly. They have the right to education and the right to employment. For such rights, science can play a role, and that role has to be emphasized. In the name of science, sometimes we promote superstitions. The government has come to a conclusion that we can replace science with superstitions. I emphatically say that science is science, not superstitions. When we talk about cow dung, I know cow dung is great, but cow dung is not the fuel for the whole progress of the country. Sir, one more thing I can tell you. Science is most important than anything else. But what we say today, we are going to the... Thank you. We are going to the conclude. priest and decide the time for launching. Sir, you are a doctor. May not be good. Sir, science can help us, not the other way of doing things can help us. In this way, I believe that the government has to learn from ISRO a lot. ISRO will help the government also to function in a scientific way and allow them, give them the freedom to work scientifically and properly with all autonomous way of doing things. Thank you, sir. Sri Arun Singh. धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, सभी देशवासियों के लिए 23 अगस्त का दिन था, समय का लगभग 6 बजे थे और चाहे छोटे कस्बे का कोई व्यक्ति हो, वहाँ से लेकर के गली मोहल्ले तक लोगों ने सभी टीवी पे आंख गड़ा करके देख रहे थे कि अब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी नहीं होगी, कैसे होगी, एक एक मिनट की उत्सुकता थी। और यह सभी ने देखा कि अब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चारों दिशाओं में पटाखे बजे, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी और सभी देशवासी एकजुटता के साथ, हर्षोल्लास के साथ साइंटिस्टों को भी बधाई दी और प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए अभिनंदन व्यक्त किया। यह बहुत अच्छा हुआ कि इसके बारे में आज संसद में चर्चा करने के लिए आपके माध्यम से सरकार ने इसमें एजेंडा रखा। यह इसलिए भी जरूरी था कि देश के कोने कोने में लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि हमको ध्यान है कि जब इसकी लैंडिंग हुई तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मंत्री ने लिखा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग में जो 3 साइंटिस्ट गए थे उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग किया, तो उनको यह भी नहीं मालूम था कि उसमें साइंटिस्ट नहीं गए थे, वो राजस्थान सरकार के मंत्री थे। ऑन द रिकॉर्ड है। इसलिए अगर इस पे चर्चा हुई है तो देशवासियों को इसके बारे में संसद के माध्यम से अधिक जानकारी मिली और इसके लिए सरकार का अभिनंदन हम करते हैं। मान्यवर, यह वास्तव में गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है और यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि जब मैं कहता हूं तो हमारे वक्ताओं ने भी बोला पहले कि अमेरिका, रूस, चीन के साथ हम जो विशिष्ट क्लब है उसके अंदर हम
हमको शामिल हो गए। उसी के साथ साथ साउथ पोल पे जाने वाला भारत एक पहला देश बना। और रूस का, चाइना का, जहां हजारों करोड़ रुपए एक खर्च करके लूना 25, चाइना E4, वह जितना पैसा खर्च करके उन्होंने इसका जो चंद्रयान का जो उन्होंने बनाने का काम किया, हमारे देश में तो चंद्रयान थी, यह भी ऐतिहासिक ही होगा कि 960 करोड़ रुपए का बजट और 613 करोड़ रुपए में ही वो पूरा हो गया। इसके लिए साइंटिस्टों को मैं ढेर सारा बधाई अभिनंदन करता हूं। यह इसलिए भी ऐतिहासिक उपलब्धि है कि जब हम कहते हैं कि 2047 में भारत विकसित भारत होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि 2047 में भारत विकसित भारत होगा, उसके लिए भी यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका हो, यूके हो, यूरोपियन कंट्रीज है, उनकी अगर आर्थिक प्रगति हुई है तो वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में कांग्रेस के शासनकाल में इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनकी नीतियां के कारण, दूरदर्शिता के कारण, जो पहले भारत 2014 में 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है और 2027 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2047 तक पूर्ण रूप से भारत विकसित भारत हो जाएगा। यह उसके संकल्प को सिद्धि में बदलने का भी यह काम करेगा। इसके साथ साथ यह इसलिए भी गौरवशाली उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है, कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं, वह इक्विपमेंट्स है, वह मेक इन इंडिया भारत के बनाए गए हैं। कुछ पार्ट्स को HL ने बनाया, बेल ने बनाया, अलग अलग कंपनियों ने इसके पार्ट्स बनाए। तो मेक इन इंडिया के माध्यम से पूर्ण रूप से यह स्वदेशी है, नट बोल्ट से लेकर सब कुछ इसमें स्वदेशी है। इसलिए भारत के लिए यह बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे लाभ क्या होगा? मानो इसके माध्यम से बहुत बड़ा लाभ होगा। सबसे पहले तो जो हमारे 15 मिनट 5 मिनट इसके माध्यम से स्पेस रेवेन्यू को लाभ मिलेगा। डिफेंस सेक्टर के हमारे काफ़ी इसमें एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, आयात भी कम होगा। R&D के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी हमको इससे बेनिफिट होने वाली है। स्टार्टअप के माध्यम से, स्टार्टअप में भी इसमें काफ़ी हमको इससे प्रोत्साहन मिलेगा, टेक्नोलॉजी में भी और मेक इन इंडिया में। मैं अंत में इतने में कहना चाहूँगा कि ये तभी संभव होता है जब ऐसा नेतृत्व हो जो भरोसेमंद भी हो, और ऐसा नेतृत्व हो जिस पे लोगों को विश्वास भी हो, जो लोकप्रिय भी हो, और जो निर्णय लेने वाला नेतृत्व हो, और ऐसा नेतृत्व हो जो त्यागी और तपस्वी भी हो। ऐसा नेतृत्व केवल नरेंद्र मोदी जी में है। इसीलिए यह सब संभव हो रहा है, और इसलिए दिन प्रतिदिन इतिहास के पन्नों में छोटे मच्छरों से एक एक नई उपलब्धि लिखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती वंदना चौहान। Thank you, sir. Ma'am, 3 minutes. Yes, sir. I'll try my best, you. sir. Thank At the outset, sir, I would like to thank you for having taken up this discussion that marks the successful landing of Chandrayaan on the moon. As congratulatory messages were coming from far and wide, from different heads of the states and various space organizations. Sir, it was in fitness of things that we discuss this issue here and express a heartfelt kudos to the scientists, experts, and all others involved directly and indirectly who are responsible for this stellar achievement. On behalf of the NCP, sir, to the entire team, in inverted commas and capital letters, I would like to say you have made us immensely proud, and we express best wishes for more such successes. Sir, we are all set to pass the Women's Reservation Bill tomorrow. On the eve of this historical day, sir, it would be noteworthy to observe, and Nirmala ji has already mentioned, observe, acknowledge, and also celebrate the significant involvement of women scientists and experts in this mission. It is extremely encouraging, sir, that not only does the women force in ISRO constitute 20 to 25%
of the entire force of 16,000 employees. But as we learned, 54 women, sir, played a very important role in this mission. And just to be on the record with Nirmala ji has already said, but I had also noted, so I would like to take name of just 4 scientists, and I'm sure there are many more. Kalpana K, who is Associate Project Director, Nandini Harinath, Scientist and Operational Specialist, Anuradha T.K., Scientist and Project Director, Ritu Srivastava, Senior Scientist. Tiruchi Shivaji has also made an appeal, sir, that we make a register and all of us sign it. I second that, sir. And show, sir, therefore, this is a moment of great pride for us. These sisters, sir, have not only contributed richly in the success of the mission, but have instilled a sense of motivation, purpose, and hope of fulfillment of aspirations for the young girls of India. So as we celebrate the success of Chandrayaan and India's glorious space journey into the celestial space, I will be failing in my duty if I do not pay my heartfelt tributes to India's 2 greatest scientists, Dr. Vikram Sarabhai and Dr. Homi Bhabha, who in a way laid the foundation of India's science and technology revolution with their vision and foresight. I will also be failing in my duty if I do not mention the rich contribution of our first Prime Minister of India, Shri Jawaharlal Nehru, who in spite of the glaring challenges in our country, like poverty, unemployment, disease, disaster, enthusiastically supported scientific temper in our country and over the years laid the foundation for establishment of several technical and scientific institutes, so also addressing subjects ranging from atomic energy to space science, earth sciences to astrophysics, genomics to nanotechnology, and the list can go on. So my last point, sir, which many members have already voiced, sir, I make only one ask, as many members have also said. And sir, you have also seconded or rather voiced that opinion that the budgetary allocation for R&D has to be increased, and I'm sure that will happen. Today, sir, India has the lowest allocation in the world. US is 2.9, Sweden is 3.2, Switzerland 3.4. Amongst the BRIC countries, we are the least, and therefore, sir, it is very necessary that we address this for 3 reasons. One is more innovation will happen. Second, there will be less brain drain. And thirdly, the make in India will be converted into made in India. So my last one line. So there are many songs on Chand. One which is very relevant, a quartet which is very relevant here, I would like to say and finish my speech. Na chanda Roos ka, na ye Japan ka, na ye American pyare, ye to hai Hindustan ka. Thank you very much. Shri G.K. Vasan. Sir, 3 minutes. Sir, very happy today, sir, to join 140 crore plus Indians to thank our honorable scientists, sir, who have proved, because of their commitment, concentration, hard work, and intelligence, and given fame and name for India in the international level, sir, that too in the 75th year of our independence, sir. Sir, India today is equipped in the field of education, farming, healthcare. Now we have proved ourselves in the space sector, sir. I would only like to congratulate all the scientists, sir. At the same time, sir, being a proud Indian from Tamil Nadu, sir, I would like to congratulate project managers, mission managers who have been helping this success from Tamil Nadu, sir. Thank you very much. Thank you, thank you. Professor Ram Gopal Verma. वर्मा फिर कह दिया वर्मा ऐसा फिल्म देखते लगता आप भी जा रहे Well, I can tell you, it was not deliberate. Sir. So, Professor Ram Gopal Yadav, the earlier part is deleted. Okay? सर, जब भी वैज्ञानिक कोई बड़ा काम करते हैं, उपलब्धि करते हैं, तो सारी मानवता के कल्याण के लिए ही होता है।
वो देश की सीमाओं के अंदर भी नहीं उसे बांधा जा सकता। हमारे वैज्ञानिकों ने जो अभी काम किया है, जो ये उपलब्धि है, कालांतर में इससे जो इसकी रिसर्च से जो रिजल्ट्स आएंगे, मुझे उम्मीद है उससे सारी दुनिया के लोग लाभान्वित होंगे। मैं इसलिए अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इसरो के सारे वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि उनकी उपलब्धियां निरंतर आगे भी जारी रहें और बढ़ती रहें। लेकिन इस अवसर पर अगर मैं जितेंद्र सिंह जी को बधाई न दूं, जो संबंधित मंत्री हैं, तो वो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आखिर लीडरशिप तो कहीं होती ही है। वैज्ञानिकों को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं एक और काम के लिए, उन्होंने लैंडर का नाम विक्रम रखा। On a point of Sarabhai. Professor, on a point of fact, Honorable Prime Minister is the Cabinet Minister for this department. That I know. I am his student. A student can always put across a situation. बड़े पेड़ के नीचे भी वाले पेड़ों को छाया मिलती रहनी चाहिए, हवा मिलती रहनी चाहिए। ये आपने बहुत ठीक कहा। When our first Prime Minister, a giant of a person, तब कहा गया था, nothing grows under the banyan tree. It is heartening to note कि यहाँ बनियान ट्री के नीचे आप इन लोगों से क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर जितेंद्र भी हैं। Please go ahead. उसके नीचे एक भी नहीं पनपेंगे। सर, हमारा जीरो पे करो, टाइम जीरो। एक घड़ी वाले जीरो पे करो तो ये मुश्किल हो जाएगा। सर, कल से नए सदन में जो बहस या चर्चा शुरू हुई है, कार्रवाई शुरू हुई, लंबे अरसे के बाद बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई शुरू हुई। और आज जब इस पर बहस शुरू हुई तो जितना बढ़िया तरीके से जयराम रमेश ने इसको रखा और जितना ज्ञान हमें हमारे मंत्री जी की तरफ मिला पूरे सदन को, इट वाज ए रिमार्केबल बिगिनिंग ऑफ द डिस्कशन। हालांकि बाद में ये डिरेल हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति घोषणे की जरूरत नहीं थी। वैज्ञानिकों के लिए बात कर रहे हो और कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। एक आप तो थे नहीं यहाँ। अब आप राजनीति में जा रहे हो प्रोफेसर साहब, अब आप राजनीति में जा रहे हो। अब आप हमें बीच में डिस्टर्ब मत करो। और मैं आज बोलूंगा 5-6 मिनट, बीच में घंटी मत बजाइए। ओके। तो ये बहस जो थी वो जितनी बढ़िया शुरू हुई, उसका अंत उतना ठीक नहीं था। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने इंटेलिजेंट हैं। वे सब जानते हैं कि आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार राज्यसभा में शपथ हो रही थी, नहीं लोग, हमारे बगल में लालू जी बैठे थे। उनका एक कैंडिडेट आया शपथ लेने। मैंने कहा, लालू जी कल ये पूरा प्लास्टर बांधे हुए था, कह रहा था झारखंड में गए थे लालू जी की जमानत के वक्त, तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया। आज ये सही चल रहा है। बोले राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था। तो मैंने कहा, फिर टिकट क्यों दी आपने? फिर टिकट क्यों दी आपने? बोले इसकी जाति का कोई बड़ा आदमी नहीं था, देना था, मजबूरी में लाना पड़ा। मैं जानता हूँ बहुत फ्रॉड था। तो सब जानते हैं मोदी जी कौन क्या है। कई बार ऐसी बातें मत किया करो आप लोग को स्वयं आपके नेता को लगे कि ये ज्यादा शर्मिंदा कर रहा है। कई बार कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, कौन नहीं जानता है। और जितना उनके लिए कहना चाहिए उतना कह भी नहीं पाते आप लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि बहस को बहस तक ही रखिएगा। कई बार कुछ लोग अपने नेता का अनावश्यक नाम लेके उसको विवाद में ला जाते हैं। उसका आलोचना का उसकी कहीं आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसी बात कहेंगे कि लोग अनावश्यक उसके फिर जवाब देने लगेंगे। तो जो समझदार लोग हैं अपने नेता पर कभी आंच नहीं आने देते हैं। लेकिन आपके साथ मैं बीजेपी की लीडरशिप से कहना चाहता हूं, आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हुए हैं। ठीक लोगों को बोलने के लिए मौका दिया कीजिए हमेशा। मैं राय देना चाहता हूं, उम्र में भी बड़ा हूं, अनुभव में भी आप लोगों से बहुत बड़ा हूं। मैं कभी राजनीति नहीं लाना चाहता हूं जब मैं बोलता हूं।
इसलिए कहता हूं कि लीडर के अगर पक्ष में हो तो कभी अपने बातों से, अपने कर्म से उसके ऊपर लांछन मत लगने देना। और यहाँ लोग इसी तरह की बात करने लगते हैं। बहस का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया शुरू में था, वो सब खराब हो गया। तो मैं तो केवल वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने के लिए और ये गवर्नमेंट से चाहूँगा कि जो आप कहते हैं कितने पैसे खर्च हुए, इस अभियान के लिए जितने खर्च हुए उससे 10 गुना ज़्यादा भी खर्च हो जाते तब भी कम थे। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। सारी दुनिया इससे अचंभित है। बड़े बड़े, चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत यूनियन, भले ही उन्होंने 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को उतार दिया हो चंद्रमा पे, चाहे भले ही यूरी गागरिन, वैलेंटिना तारस्कोवा और तमाम उनको भेज दिया हो अंतरिक्ष में, लेकिन ये हिंदुस्तान की उपलब्धि सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को, राजनेताओं को चकित करने वाली थी। कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। इसलिए मत कहिए कि 6,600 करोड़ में या 15 करोड़ हुए। जितना भी खर्च हो जाए कम था इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आप पसंद करेंगे, जब चंद्रमा की फोटो भेजी गई तो कुछ साहित्यकारों को, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हुई। और दिक्कत स्वाभाविक थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो करवा चौथ पे महिलाएं चंद्रमा को देती और बहुत खूबसूरती का वो माना जाता था। मैं बताऊं, केशव जी एक बहुत बड़े हिंदी के कवि हुए। ये बैठे हुए कहाँ गए वो, सुधांशु, सब जानते हैं उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। एक बार वो यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हुए थे, कुछ बच्चियां आ रही थी, उन्होंने कहा लड़कियां आ रही हमारी तरफ। आई तो आके उन्होंने कहा था, बाबा लाइब्रेरी किधर है, और चली गई। तो उन्होंने 2 लाइन लिखी कि केशव केसन अस करी जो अरिहून कराए, चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कह के जाने। केशव ने कहा कि इन बालों ने, सफेद बाल थे, इन बालों ने ऐसी दुश्मनी निभाई कि दुश्मनी भी नहीं करता है कि चंद्र बदन, चंद्रमा जैसे चेहरे वाली, हिरनी जैसी आंखों वाली लड़कियां बाबा कह के चली जाती हैं। तो चंद्र बदन मन चंद्रमा जैसा बदन। अब एक लड़की का नाम है शशि, उसने कहा साहब चेहरा इसका बहुत खराब है चंद्रमा का, हमारा नाम तो शशि, शशि माने चंद्रमा। कोई शशि प्रभा है, कोई चंद्र प्रभा है। इस और तमाम आदमियों के नामों के पीछे चंद्र लगा हुआ। सुभाष चंद्र, मानिक चंद्र, तिलक चंद्र, फला चंद्र, चंद्रमा से ही तो लगा हुआ था। अब ये है कि जाने अनंत काल से हम लोग चंद्रमा को बहुत खूबसूरत मानते रहे, इसलिए हम तो अपने वैज्ञानिकों को कहेंगे कि उनकी बदसूरत फोटो मत भेजिए, रिसर्च करते रहिए। लोगों के मन में ये 6 मिनट। आपने काफी समय दिया मुझे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे सदन के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं, वैज्ञानिकों के साथ साथ का आज एक बहुत अच्छे काम में हम लोग यहाँ जुटे। थैंक यू। श्रीमती महुआ माझी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। 3 मिनट्स। आपने मुझे इंडिया के ग्लोरियस स्पेस जर्नी चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसरो को और देश का गौरव बढ़ाने वाले तमाम साइंटिस्ट्स को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। पूरी दुनिया उनकी इस उपलब्धि के लिए उनका आभारी हो गया है। उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरा जन्म एक ऐसे शहर में हुआ जहाँ पर HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, जो कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को हमेशा बहुत आगे बढ़ाया। और आप सभी जानते होंगे कि चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों में जो लॉन्चिंग पैड है और बहुत सारे उपकरण HEC में बने हुए हैं। ये 1952 में बना था, जबकि हमारे पंडित नेहरू जी ने इसे बनाया था। और ये एशिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ये मदर इंडस्ट्री माना जाता है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लगातार मैं कई वर्षों से देख रही हूँ, 2014 के पहले तक उसकी स्थिति लगभग ठीक थी, 2014 के बाद से लगातार डिटोरिएट कर रही है। और अभी 18 महीने से वहाँ के कर्मचारी, स्टाफ, अफसर को अभी तक सैलरी नहीं मिला है। वो लोग चाय बेचते हैं सुबह में, फिर ऑफिस जाते हैं।
और आपको बता दूं उनके पास कोई परमानेंट अभी सीएमडी भी नहीं है। वो भेल के सीएमडी को वहाँ पर 3 साल से रखा है उन्होंने, और 3 साल के अंदर वो 5 से 6 बार ही वहाँ पर आए हैं। डायरेक्टर भी नहीं थे, अभी भी उसी तरह से टेम्पररी डायरेक्टर रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो कर्मचारी और जनप्रतिनिधि है वो आंदोलन के समय में उनका ये कहना होता है कि ये नीति आयोग ने जिन 48 पब्लिक सेक्टर का लिस्ट बनाया उसमें प्राइवेट के हाथों बेचने के लिए उनमें हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का नाम भी है। Honorable member, जी, you have raised a very important issue. Yes, yes. And you should be grateful that the honorable minister wants to मुझे react. बोलने दिया जाए। One second. जी, मैं आपको बोलने दूंगी। मैं मुझे बोलने दिया, मेरा समय बहुत कम है। मैं एक बार बोल दूं, अभी लगातार आंदोलन हो रहा है, मैं बोलूंगी। Please. आपका सुनूंगी, लेकिन पहले मुझे बोलने। Honorable member, at my request, since you have raised a very good issue, a human issue, लेकिन इसे पूरा तो करने दीजिए। And your success lies that the honorable minister. नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगी। 1 second, he is ready to respond. Allow him to respond. You will resume after I tell you. ठीक है। चेयरमैन सर, मैं समझता हूँ बहुत सार्थक चर्चा रही है। इस चर्चा में सभी ने एक बहुत अच्छी तरीके से हमारे साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स के बारे में चर्चा की। बहुत पूरे 50-60 वर्षों के परिश्रम की चर्चा की। अगर कोई इस प्रकार का आरोप तथ्यों के साथ टेबल करे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है माननीय जितेंद्र सिंह जी मंत्री जी ने इसके ऊपर पूरा विस्तार से जब जानकारियां दी हैं, उसके बाद फिर एक बात, शायद आपने सुना नहीं होगा जितेंद्र सिंह जी के भाषण को। आप जिन विषयों के बारे में बात कर रहे हैं उसको आपको सब्सटेंशिएट करना चाहिए। ऐसे हम आरोप लगाएं, खासतौर पे इतने अहम संस्था के ऊपर, इसरो जैसी इम्पोर्टेंट संस्था। जयराम जी ने ठीक बताया कि 60 वर्षों का इसका इतिहास इस देश को मेहरबानी करके विषय को डाइवर्ट करने के बदले आज उनकी उपलब्धियों के ऊपर ही। No, I can tell you, no one can divert the issue. Anyone who makes a statement is under obligation to prove it. We'll take steps. Please go ahead. Please conclude. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एचईसी के पास बहुत बड़ा लैंड था जहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाया गया, और उसमें उन्हीं की लैंड को लेकर अभी उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वर्क ऑर्डर है उनके पास, लेकिन उसके लिए उनके पास पूंजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर उनके जो बच्चे हैं स्कूल से उनके नाम कट रहे हैं क्योंकि वो फीस नहीं दे पा रहे बच्चों के। उनके बच्चे अखबार बेच रहे हैं, और जहाँ पहले एचईसी में जो वहाँ से टैलेंटेड बच्चे निकलते थे, आज पूरी दुनिया में वो साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि हम लोगों से देखा नहीं जाता, और करीब 2500 कर्मचारी इसके लिए अफेक्टेड हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एचईसी के लिए कुछ किया जाए। कल ये लोग आ रहे हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए। अगर मैं फेक कह रही हूँ तो आप लोग वहाँ से पता कर लीजिए, वो लोग धरना देने आ रहे हैं वहाँ के कर्मचारी, और लगातार इस तरह से वो परेशान हैं। और अभी से नहीं, मैंने राज्यसभा में भी ये मुद्दा पहले उठाया था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं किया गया है। जिस तरह से भारतीय रेल, इंडियन एयरलाइंस, एयरपोर्ट, बंदरगाहों को जैसे सरकारी उपक्रमों को लगातार बेचे जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनको भी बेचने के लिए सिख इंडस्ट्री घोषित करने की कोशिश हो रही है ताकि उसको प्राइवेट के हाथों बेचा जा सके। तो मेरा अनुरोध है केंद्र सरकार से कि कृपया इस पर ध्यान दिया जाए और इसे पूर्णकालिक सीएमडी मिले और यहाँ वेतन मिले। 18 साल से उन्हें वेतन नहीं मिला। You have drifted 100%. जी। Once I thank you now. I would request the honorable member that she has made, I am sure very thoughtfully after verification, certain factual assertions. The honorable minister has a different opinion on that. I would urge you to put the relevant record on table of the House during course of the day. Shri Santosh Kumar P. Yes, ma'am. Okay. I think it's a very valid point and reasonable point. You do it by tomorrow till end of the House session. Shri Santosh Kumar P. Thank you, Chairman Sir, for allowing me to take part in this important discussion. I join with the members of this august House to congratulate those scientists and workers who made this spectacular achievement. No point in making a lengthy speech. Jairam Rameshji made an absolutely brilliant speech.
how mesmerizing is the history of Indian space science. It all started with the leadership of Jawaharlal Nehru, who has friendship with Albert Einstein and even many other scientists. So I would like to take this opportunity to point out one thing, sir. I am from a state, from Kerala, a state which introduced science policy in the year 1972 for the first time in the history of India. And I am sorry to say, when I asked a question to the minister concerned about the Indian state which introduced the science policy for the first time, the answer was so shocking that the answer stated that it is Gujarat in the year 2018. So this shows how the ruling dispensation is creating new history. They are absolutely disconnected from history and reality. In their mad race to praise Modi, they even forget Vajpayee. So this is what is happening. So I request the chairman to take care of this thing. So kindly correct that answer, because it was C.H. Menon, one of the great statesmen of this country, who introduced the first science policy in the country, and not in Gujarat in 2007. It's absolutely not true to the facts. And sir, this, it is important to note that our country is moving forward, and in the coming years, we will achieve more and more things. And science and technology is not the monopoly of anyone. Science and technology will continue, and there is no point in comparing the lunar, Aditya, and Chandrayaan. Speed. The minister was comparing the speed of lunar, Aditya, and Chandrayaan. So time has changed. Technology has changed. So obviously, new technology will help us to move forward. So that reality has to be accepted. It is not because of the political leadership, but political leadership has an important role to play. But don't undermine history. Don't try to eclipse others' contributions. This is what I would like to say. Thank you for allowing me. Thank you. Shri Jayant Chaudhary. Thank you, sir. I stand to express my deepest admiration and gratitude to the scientific community, to the institution of ISRO, and of course, to the leadership which the government of today, whether it is a minister in charge, like you rightly pointed out, cabinet minister is himself the prime minister of the country. Undoubtedly, credit goes to him, to the entire cabinet, to the government, to the institutions, that in one swoop, we landed on the dark side of the moon. But I think we have lit a fire of imagination. We've illuminated the possibilities that exist for the youth of our country when we apply ourselves, when we put our entire focus and resources, when we take our scientific ideas forward. So again, a great discussion today, sir, from Jairam Rameshji, who made very forceful points. Of course, we appreciated the intervention of Nirmala ji, Honorable Finance Minister, who brought out many facets and informations that were perhaps not there in the public domain. Sir, at the same time, while we give credit to the leadership of this government, and of course to the visionary leadership of governments in the past, because like another member said, it's a baton race, it's not a singular race, it is a team effort. We must also recognize that if Team India, cricket team, wins the World Cup tomorrow, our spectators are not going to thank the chief of BCCI. A large part of the credit will go to Team India, to the players, to the coaches, to the management. Similarly, largest effort should go to provide more courage, more resources, to foster an open learning environment for our youth, for our students, and open the minds of the generations to come. Sir, Nobel laureate Sri Ramakrishnan has said that science flourishes when real, freedom exists in terms of ideas and opinions and minimal ideological interference. I remind this august House of our constitutional mandate. I remind the citizens of this country of our constitutional mandate, our fundamental duty to build our scientific temper. But what is happening? We are also seeing mob temper. We are seeing deaths at the hands of mobs. We are seeing more incitement for hate
using religious identities, using caste identities, using biases that have existed for thousands of years in our society. We must rid ourselves of these things. And here I remember the rationalists, Sri Narendra Dabholkar, S.S. Kulbargi. No civilized society can tolerate such murders. Whoever was responsible, the ideology that was responsible, should be brought to book, sir. We talk about scientific temper. हम यहाँ क्यों बैठे हैं? ये समय, ये तारीख कैसे चुनी गई, क्यों चुनी गई? अगर सरकार शुभ अवसर की तलाश में, शुभ तारीख की तलाश में फैसले लेगी और टालेगी, ये सदन तैयार था, इसका उद्घाटन हो गया था। और अंतरी मन में हम सब लोग जानते हैं कि तारीख चुनी गई क्योंकि एक त्यौहार है, सबको लगा शुभ अवसर। लेकिन ज्योतिष के जो विद्वान हैं या कोई पर्ची निकालने वाला बाबा है, उनके इशारे और कहने पे आप फैसला मत लीजिए। जब जो सही है, आप जहां आप सक्षम हैं, आप फैसला लीजिए, पूरा देश आपका साथ। सर, टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज, our Minister for Science, Sri Jitendra ji, who is very well aware of the facts, he asserted that we have increased the budget for ISRO. Whereas our eminent Member of Parliament pointed out, and I reiterate, that if you look at the last budget, compare it to the budget estimates of the last year, budget of 2023-24, look at the Department of Science, you've actually cut the budget by 8%. ISRO is achieving so much, and they need so much more. We've spent partly amounts on this mission, which is a great achievement. But look at this grand environment in which we are sitting and debating. We are spending thousands of crores on convention centers, on facilities, for ourselves. So I think we must stand and salute our scientists, provide them more resources. And I'll close my thing. I know I'm aware of the shortage of time. I'll quote two eminent people, two eminent thinkers. One is Isaac Asimov. He said the saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom. Science will not wait for us. Scientists cannot stop. They will continue their work. But society must continue to evolve and assimilate those ideas at the earliest. And in the end, sir, ISRO की बात हुई है, आखिर में खुसरो की बात कर ले तो कोई बुरा नहीं मानेगा। छोटी सी कहावत है जो बताती है कि हम अलग अलग बात करते हैं, आखिरकार तो प्यार की बात हावी होगी, एक ही बात चलेगी। छाप तिलक सब छीनी रहे, मुंह से नैना मिला के। धन्यवाद। Honorable members, we have had real great participation, and every member has had the occasion to contribute effectively. We must now have someone who can contribute to it in a poetic manner. I now call upon Sri Ramdas Athavale as the last speaker on this issue. सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर अपनी चर्चा हो रही है और सभी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये साइंटिस्ट की स्तुति कर रहे हैं। अभी मैं 4 दिन लंदन में था तो वहाँ मुझे बहुत सारे लोग मिले और उन्होंने मेरा अभिनंदन किया कि भारत के साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा काम किया है। और हम जानते हैं हमारे जयराम रमेश जी हमारे पुराने मित्र भी है, बहुत क्लेवर आदमी भी है, कांग्रेस को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के बड़े नेता है रमेश जयराम, कांग्रेस के बड़े नेता है रमेश जयराम, लेकिन सभी का आपने नाम लिया, लेकिन आपने नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी का नाम। आज के बहुत ही सुंदर है शाम, आज के बहुत ही सुंदर है शाम, अब तो नरेंद्र मोदी जी को याद करो रमेश जयराम। हम जानते हैं कि इसमें पूरा साइंटिस्ट का हिस्सा है। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की है, ये पूरा इतिहास है।
साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी कोशिश की, लेकिन चंद्र पर, चांद पर जाने की सफलता अपने को नहीं मिली थी। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब अपना देश काम कर रहा है, तब जो चंद्रयान 2 था, तब हम सब लोग तो देख रहे थे, एकदम चांद पर उतरते उतरते थोड़ी सी गलती से वो चंद्रयान वहां नहीं पहुंचा। लेकिन 1 साल बाद ही हमारे साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी कोशिश की और उन्होंने पूरी प्रतिज्ञा की थी, इस वक्त भारत का चंद्रयान जरूर चांद पर पहुंचेगा। और जब चंद्रयान 2 में हम सफल नहीं हुए थे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलोर में जाकर उनका अभिनंदन किया था। आपने डरो मत, मैं आपके साथ हूं और चंद्रयान 3 की तैयारी करो। और चंद्रयान 3 अपना सफल हुआ है। जो भारत अभी पूरे देश दुनिया भर में भारत का नाम है, पहले भी नाम था लेकिन अभी और ज़्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें राजनीति करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, जो होता है उसमें सभी लोगों ने सहयोग करना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, उन्होंने मतलब उसमें 13,500 करोड़ रुपए इस चंद्रयान के लिए उन्होंने दे दिए थे, और उसमें मतलब नाम लेने में क्या दिक्कत है। रमेश जयराम तो आदरणीय नेता है और आपने मोदी साहब का नाम लिया नहीं। आप मत ले लो, आप नहीं लेते, लेकिन हम लोग ले लिए, जनता ले रही है, इसलिए ठीक बात है, वो बात नहीं है। लेकिन जयराम रमेश जी ने बहुत अच्छा इतिहास बताया, पूरा 1952 से लेकर अभी तक का इतिहास पूरा बताया। इसी तरह मतलब चंद्रयान में हम सफल हुए हैं, G20 की अध्यक्षता अपने को मिली है, डेवलपमेंट की दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभापति महोदय हमसे नहीं बोलते कि भाई हमने पूरा क्या किया है, आप लोगों ने भी किया है, लेकिन जो आपने किया नहीं वो करने के लिए हम लोग आए हैं। आप अगर करते थे तो हम नहीं आते थे, जनता हमको आने नहीं देती थी। इसीलिए मतलब ठीक बात है, सत्ता जनता जो तय करती है उनको सत्ता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के 1982 में दो MP थे, अटल जी के टाइम पर 182 लोग चुनकर आए, नरेंद्र मोदी साहब के टाइम पर 2014 में 282 लोग चुनकर आए, 2019 में 303 लोग चुनकर आए, और अभी 2024 में कितने आएंगे पूछो रमेश जी। ठीक है, मतलब जो है वो तो 2024 में आप भी तैयारी करो, आप जितने लोगों को इकट्ठा करना उतना करो, तुम नेताओं को इकट्ठा करो, हम जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। नहीं ठीक है ना, उनको भी अधिकार है, उनको सत्ता में आने का अधिकार है। आप 60 साल तक सत्ता में रहे, मैं भी आपके साथ रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जिनको जनता उनके साथ जाती है उनको सत्ता मिलती है। आपने कई नेताओं को आपने एक साथ लाया है, हमको ज़्यादा नेताओं को साथ में लाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि और भी ज़्यादा पार्टियों को ले लेंगे तो टिकट देना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। नहीं ठीक है ना, मतलब ज़्यादा हमको पार्टियों की जरूरी नहीं है, हमारी ताकत है। बीजेपी के साथ मेरी RPI है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, गांव-गांव में मेरी पार्टी की शाखाएं है। मेरे पार्टी की कितनी MP है मत पूछो, लेकिन मेरे पार्टी का एक भी MP नहीं है। मैं लोकसभा में चुनकर आता था, मैंने 2014 में जब मैं मोदी साहब के साथ आया, तब अगर मैं आग्रह करता था कि मुझे लोकसभा में लड़ना है, मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था, चौथी बार मैं शिरडी से हारा था। तो मैंने सोचा कि और 5 साल के बाद क्षेत्र बदलना ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने बीजेपी के पास मैंने राज्यसभा मांगी और बीजेपी ने मुझे राज्यसभा दी। नहीं तो मैं लोकसभा में आता था, लेकिन मैं राज्यसभा में आने के बावजूद भी
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे उनके मंत्रिमंडल में ले लिया है। थैंक यू। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी। थैंक यू मुझे, थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए थैंक यू। ठीक बात है, तो इसीलिए हम सब लोग जो है हमारी 2024 की तैयारी चल रही है और हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स। We now come to end of a very fruitful and constructive discussion on the nation's glorious journey in space exploration. I heard the honorable members' views in the House and outside. Observations and assessment with rapt attention. One common thread was evident in the speeches: national interest, and that it is glorious, concerted effort. There was resonance of a shared sense of pride and accomplishment in our space odyssey, made possible by the brilliant minds of our scientists and technicians and visionary leadership on appropriate occasions. The vast expanse of space has enchanted humanity since time immemorial. Members have reflected on that in terms of poem also. Bharat, one of the oldest civilizations in the world, has nurtured a strong tradition of space science and astronomy. The rich contributions of our earliest scholars like Aryabhat, Varamihira, Brahmagupta, Bhaskar, among others, are recognized not just by Bharat, but by the world at large. In recognition of their contribution, the very first Indian spacecraft, named after the mathematician and astronomer of Gupta era, about 15 years old, Aryabhat, was launched in 1975. The spirit of exploration built upon our scientific heritage, fueled by courage and innovation, has propelled us to explore the uncharted territories of space and renewed vigor. While doing so, on the one hand, we are showcasing our technological prowess. On the other hand, we remain firmly dedicated towards reaping its benefit for social good and to enhance the lives of our countrymen. Honorable members, you may recall during the mission Chandrayaan-2, our Honorable Prime Minister Narendra Modi was personally present to encourage and motivate the scientists at ISRO headquarters in Bengaluru. This consistent support and belief of leadership in scientific community has undoubtedly been a vital factor in the success of Chandrayaan-3 and our earlier missions. India's space program is a source of national pride. It is a befitting testament to the country's scientific and technological self-reliance. It is our duty as the custodians of people's aspirations and stakeholders in their future to provide steadfast support to the new frontiers of space exploration. Let us be resolved, stand by Bharat as it marches to regain its past glory in Amrit Kal. Honorable members, various leaders, Mr. Tiruchi Siva, Dr. Keshav, Jairam Ramesh and others, I can name all of them. They said it is an occasion and the temper of the debate was very high. It was contributory. Brilliant speeches were made by Jairam Ramesh, by the Honorable Minister, by the Honorable Finance Minister. But I can tell you, I have listened to each and every speech. Every speaker has contributed a perspective to the issue. In that view, I place the following resolution before the House. I am quoting the resolution. India's space program is a source of national pride. It is a continuing testimony to the nation's inherent scientific and technological prowess. Affirmative ecosystem and visionary leadership has enabled our scientists to fully realize
their potential, unleash their energy, and attain this historical milestone. This House recognizes and appreciates the scientists, including and particularly the women scientists, for achieving this arduous feat with the successful soft landing of Chandrayaan-3 near unconquered south pole of Moon. This accomplishment, along with the other space missions, will usher in long-lasting economic and social upliftment, unquote. May I take that this resolution is adopted unanimously? Thank you. Honorable members, I have to inform you that it has been decided in consultation with the floor leaders that the Constitution 128th Amendment Bill 2023 will be taken for consideration and passing after it is reported to this House tomorrow. Is the sense of the House? Thank you. Yes. Reported, introduced, considered and passed all in the space of tomorrow. Honorable Leader of the House, it has been worded to categorically convey that Time is 7.5 hours for discussion. That is what has also been agreed. Yes. So please reiterate that. 7.5 hours is not the time, not less than 7.5 hours. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. Thursday, the 21st of September, 2023.